very good afternoon, everyone. So we are the Quizzing Society, and I'm really proud to present Sir Dr. Sethi with us, who is the quiz master for the quiz today. He's been teaching since 25 years. इतनी तो हमारी एज भी नहीं थी, तो पैदा भी नहीं हुए 22-23 के फिर से, और वो सर 25 years से पढ़ा रहे हैं. And he's a multifaceted person, author, guide, बहुत inspirational videos देखी हमने सर की. Very big inspiration, बहुत knowledgeable sir है. So it's a beautiful opportunity this time to actually have sir with us to take this quiz. I'd like to invite sir to say some words of wisdom. Ji, thank you everyone, and it is such a pleasure to be able to come to this esteemed institution and come for this quiz. मैं सबसे पहले ना to begin with I want to congratulate all the winners कि you are already on the top. इसके बाद आप जीतें या ना जीतें, it doesn't really matter, but the good thing is that you participated, है ना? आपने participate किया, आप यहाँ तक आए और आप इस round तक पहुँच पाए, that is good. तो the most important thing I want to tell all of you is कि कोई भी हम quiz में आते हैं, it actually resembles the real competition. मतलब चाहे आप उसको फेस्टिवल का भाग सोचो, चाहे आप उसको मजाक में भी ले रहे हो, लेकिन अंदर से जब कोई शुरू हो रही है तो बटरफ्लाइज हो रही होंगी आपको, क्योंकि वी वांट टू विन, है ना? हमें मन करता है अब जीतना है. तो चाहे अब बाहर में ऑडियंस सोच रहा है कि फेस्टिवल है, मजाक है, लेकिन जो खेल रहे हैं बच्चे, दे वांट टू विन. एंड माय ओनली एडवाइस टू यू वुड बी व्हेन वी बिफोर वी बिगिन द क्विज इज लुक एट ईच क्वेश्चन वन एट अ टाइम. अभी ये मत सोचो कि जीतना है, हारना है, आउटकम क्या होगा. अभी ये सोचते हैं कि हर क्वेश्चन के ऊपर वी डू अवर बेस्ट, एंड देन हो सकता है कि एक राउंड आपके फेवर में जाए, एक राउंड आपके फेवर में ना जाए, बट द गोल शुड बी कि इन द एंड ऑफ द क्विज व्हेन वी लुक बैक वी शुड बी हैप्पी अबाउट द वे वी पार्टिसिपेटेड. हमें आखिर में जब पीछे मुड़ के देखें तो अच्छा लगे कि यार हमने पार्टिसिपेट किया और हम एक कुछ सीख के गए, है ना? सो एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ऑडियंस है हम आपके लिए भी वी हैव इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू मेक द क्विज एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, है ना? एंड वी हैव very innovative rounds for you. We have planned a lot of things and we have tried to keep the pattern as per as the real exam pattern. We have tried to do it like the real exam, and I'm sure you know this year in the NEET PG exam the paper was based on very image based questions, and a lot of questions in the NEET PG were also integrated. So that will be my idea. I'll try my best to look at the questions just like we do it in the NEET PG exam, and we'll try to keep it interesting. We have kept some very exciting rounds for you, which will have a lot of things like gambling also going on, which is not allowed in the college otherwise. Well, we'll do the betting as well, and we have a lot of plans for you. So are you excited to participate in the quiz? Yes, and that is what matters. If you are excited to participate, that is what matters. जीतेंगे हारेंगे कोई बात नहीं, कुछ सीख के जाएंगे और कुछ memories बनाएंगे. With this note, I welcome you to this quiz and I request the team to take it forward. Thank you. So basically, we have a total of 6 sub-rounds. Rules, time and points for each round will be announced with the respective section. Be as specific and technical with your answers. So these are the 6 rounds. First is your from filth to finding. Round 2 is the AI connect or the connect round. Round 3 is into the clinics. Round 4 is choose your poison. Round 5 is the option round, and round 6 is the rapid fire round. Okay, so basically, rules for the first round. So this is a round with 3 clues. Clue 1, if you answer the question based on the clue 1, you will get plus 15. That clue can be a history, it can be a radiological image, it can be a pathological image, it can be some other thing. ECG, ABG, कुछ भी हो सकता है, and you have to answer it accordingly. अगर clue 1 पे, now please understand that if clue 1 has 2 differentials, don't answer. It can be anything. So clue 1, if you answer on clue 1, you get plus 15 points, but if you answer it incorrectly, you get minus 5. Clue 2, now you can skip clue 1 and go to clue 2, but you will, मतलब उसपे 0 होगा, you will not have any negative for that. For clue 2, if you answer based on clue 1 and 2, you will get plus 10, and again a minus 5 if you answer it incorrectly. And for clue 3, you have 3 clues in total. If you answer on clue 3, that means now you have 3 clues in total, you get plus 5. Again an incorrect would mean minus 5. So if clue 1 is wrong, you get minus 5, you come to clue 2. Clue 2 is also wrong, you get another minus 5.
Now, teams can skip a clue without penalty, meaning there's no negative marking for the unanswered clues. No pouncing is allowed in this round. And 30 seconds will be given for an image-based clue, and 45 seconds will be given for a clinical case-based clue. And the question cannot be passed. So we have 6 questions which are totally directed. So we'll start with team A. Team A is that one. Okay, now team A. Can you introduce yourself before we start the quiz? From RML, third year. Good afternoon, sir. I am Tarunim Mukherjee from RML, third year. Welcome. We give you a big round of applause for reaching so far. Okay, so team A. So the question that we have for you is this. I'll show you the first clue. Mogambo Kumar, 55-year-old male, comes to OPD with complaints of intermittent cramps in the abdominal area, weight loss of 5 kg in 6 months. Skin is itchy and has continuous itches. His skin has micro abrasions which are not healing lately. On inquiring about his bowel movement, he says he has been suffering from diarrhea and stools which are foul smelling, difficult to flush. On physical examination, you can see patient is suffering from jaundice and a palpable abdominal mass is felt in the upper quadrant. Do you want to take an answer on this clue? Clue number 1. So I just want to remind you there will be marks, but there will be negative marking also, as explained. So they want to pass. Okay. So I'm going to show you the second clue of this question. Second clue is a CT scan image, and I'm sure you can see CT of the brain, CT of the abdomen, mera bacha. CT of the abdomen, and we have put some arrows on an organ which is having some abnormality. The abnormality has been marked by the arrow. Everything else is normal in the image, which you don't need to concentrate on. So I can already see the audience are excited to answer already. So do you want to answer or move forward? They want the third clue. So as you go forward, the chances of winning will low, the score will also low down. So I would advise to take the gamble as well. Okay, question number 3, clue number 3. So the organ that was diseased had a pathological image which is looking like this. Maybe you may want to go back only. I think other images were better, but I will not go back. हाँ जी, क्या सोचते हैं? बोलिए. I can already hear the buzz. People are trying to answer. Try to, put your ears up. Maybe you can hear some answers. Nobody is answering. चल, जल्दी बता भाई. Okay, so the time is up. So we don't have any more time. So they don't score. So this question, I think we cannot pass. Yes. And before I tell you the answer, I would like to go back to the audience. So I am sure most of the audience are second year students, second year or third year? First year? First year just joined or ending first year? Just joined, I think no point. Okay. Okay, but at least from your school knowledge, I just want to know out of curiosity, from your school knowledge, do you think this is thorax, abdomen, brain, legs? Okay. I'm sure the school education is like at this level. Okay, anybody who's in first year right now? In first year. Okay, anybody from the participants? Although there are no marks, which is the organ which was marked? Pancreas was marked. Very good. And I want you to look at the size of the pancreas and tell me, do you think the pancreas is normal or is it enlarged? Enlarged. Now we go back to the question. The question was saying the history was of 6 months. Do you think some mismatch? I'm sure you know most of the participants are third year and onwards, third year, second year, third year and onwards. We'll introduce each other also, we'll get to know. But I hope you can see now the disease was chronic, and in a chronic disease in pathology you will read about fibrosis. The size of the gland should have been reduced. Here it is increased. Some mismatch is there and it is looking like a sausage.
And this was the histopath image. Now, once you see this, and let me give you the correct answer. Correct answer is sausage-shaped pancreas, autoimmune pancreatitis, IgG4 plasma cell infiltrates, and fibrosis was seen. So the path image was showing you fibrosis and plasma cells. That was the logic. The answer was autoimmune pancreatitis. Unfortunately, you could not open your account, but good that you did not speak also, otherwise minus would have happened. So let's go to team B now. Team B. So team B, can you introduce yourself before I show you the next question? Good evening, sir. Yes, beta, good evening. My name is Vaibhav Kalra and I am from MMC final year student. Very good. Such a pleasure to meet you. Shivang from MC. I would request all the first years to welcome them with a round of applause. At least make yourself useful. Okay. So before we go on to the question, again, just to remind you of the rules, you have to keep in mind the positive and negative marking at each clue. I will show you the first clue. First clue in every question will be a clinical history. 15-year-old boy comes to OPD with complaints of recurrent episodes of vomiting for last 2 months, loss of appetite, no jaundice, hemoptysis is not there, no changes in bowel habit, urinary symptoms, there is no significant previous medical surgical history, vital signs are normal, normal systemic examination, otherwise, which has otherwise generalized distended abdomen with mild tenderness in right upper quadrant with hepatomegaly. Transaminases were mildly elevated. So this patient comes to OPD, recurrent vomiting last 2 months. This, most of it, what you see here is this. So we would in the next clue. You take the next clue. Very good. Okay. Next clue again for you is similar. We see a CT image. The disease is already being marked for you. There is a image and an arrow has been marked on the disease. Okay. So were you able to place the organ? Okay. Very good. And now I'm going to show you the pathology slide. Okay, again in the slide you can see some mixed kind of appearance. There is some clues on the slide as well. Do you want to take a plunge? Now you have everything. You have seen the clinical picture, you have seen the radiological image, you have seen the pathological slides. Can you take a plunge? He's saying cavernous hemangioma of the liver, which is not correct, and plus the time is also gone. So only thing you have earned is a minus? -5. So the first team was smarter, at least they remained silent, but you were violent and you got -5. You could have avoided it, but it's okay. So we go back to the imagery and we go back to all the audience, including the participants, to have a academic discussion on the question. So basic thing is, this is a patient who is 15-year-old and a boy with a history which is giving us vomiting, some loss of appetite, but not much otherwise. When we go to the CT is showing us now problem is in which organ? Liver. Very good. And do you see a solid looking lesion in the liver? Yes. Very good. Now my question is this an abscess? No. Why not? Abscess will be more ring enhancing. It will be more like a rim. With a pus in the center has to be dark, then you should see a periphery. This looks more solid. And do you think it is a diffuse disease of the liver or a focal disease? We are looking at a focal hepatic lesion, focal solid hepatic lesion. And we need to know what variety of tumor would be seen at this age group. And then we go to the histopath image. Okay. So the answer that we have is fibrolamellar type of hepatocellular cancer. We had a central scar as well, and the tumor age group, everything we were able to fit in. So sometimes the history is not giving us the clue, but when we look at the imaging, we are able to think, like in the first image, the entire organ was enlarged. We went towards an inflammatory cause. Here we are looking at a focal lesion in the liver. We are going towards a solid lesion, so we are going towards a tumor. Okay. For the next question, I will go to Team C. So Team C, can you introduce yourself?
Good afternoon, sir. My name is Dhruv Vadva. I am from Himsar, final year student. Very good, beta. Good afternoon, sir. I am Rohan from final year Himsar. Very good. I would request all the audience to welcome them to the quiz, and they have come to your college to participate. They deserve a round of applause. So let me show you the first clue for you. The first clue that I have for you is a T2 weighted image in a 25-year-old lady. So again, you will see this is a MRI image, T2 weighted MRI image, and there is a focal lesion in the brain. Team C, do you want to make a plunge on the diagnosis straight away? Next clue. They want a next clue. Okay. Next, we are going to show you the histopathology. Okay. Do you want to see something else? Next clue. Okay. They want the third clue as well. The third clue is this. 25-year-old woman, 2-year history. So the history is long, with episode of staring, unresponsiveness for 1 to 2 minutes. During the episode, she is unable to respond to her surrounding, occasionally makes repetitive lip smacking movements. Episodes have been more frequent in the last 6 months, up to 5 to 6 episodes per week. She has been previously evaluated by neurologist, prescribed anticonvulsant therapy, which is poorly controlled. She denies any focal motor symptoms. Her physical examination is otherwise normal. EEG shows interictal epileptiform discharges in the left temporal lobe. Physician suspected a very rare tumor. So the clue is there in the last line. Clue is there in the last line. There is a very rare tumor. Okay. Yes, Team C, do you want to give an answer? No, sir. So we'll go to the audience and all the participants to now look at the question and give us the answer. Okay. Now let's go back and see the first clue, which was I think the most important clue in this entire question was the first image. First image is a MRI image. And I want you to localize the disease for me. Can you see a disease? Yes. Where is the disease located? Temporal lobe. It is in the temporal lobe. Is it in the lateral part of the temporal lobe or the medial part? Medial part. So we can see a tumor in the mesial temporal lobe. Is it, on a T2 weighted image, it looks more bright, more bubbly. It's a very bubbly kind of a tumor. And there is a characteristic pathological image. And whenever we see a focal tumor in a young lady in a mesial temporal lobe causing epilepsy, we think of a rare cause called as DNET. We think of a rare cause called as DNET. DNET is this embryoblastic neuroepithelial tumor, and it shows soap bubble cystic lesion, and the pathological slide had floating neurons in between. So you had some, cystic lesions with floating neurons in between, which was the characteristic feature of the image. This has been asked once in a previous INICET paper also. Mesial temporal lobe tumor with epilepsy, soap bubble-like appearance, bubbly appearance, and the answer is DNET. It is slightly on the tough side, but you will appreciate all of the candidates had a similar tough question with them. So we go to the team 4 now. Team 4. Dysembrioblastic neuroepithelial tumor. Dysembrioblastic neuroepithelial tumor. Okay. So we go to team 4. Team D. Team D, can you introduce yourself? Sir, Jalesh from UCMS final year. Very good. UCMS final year. Very good. So I think we welcome you with a round of applause, and I will give you your question now. Okay. 65-year-old man comes to OPD with shortness of breath, history of frequent syncopes. Thorough examination was conducted. Respiratory, GIT, CNS, unremarkable. CVS has a mid-systolic murmur on the left sternal border, auscultated, whose intensity varied from beat to beat. Murmur classically increased in intensity with maneuvers that resulted in reduction in preload or afterload, like Valsalva, standing, vasodilators, with an augmentation of the contractility. Maneuvers or medications that increase preload or afterload or that reduce contractility decrease the intensity of murmurs.
On left ventricular pressure tracing, a characteristic sign or phenomena is seen. What is this sign or phenomena called as? Okay, do you want to give an answer? So they have described the murmur, and they have also described on what maneuvers it is increasing the murmur, on what maneuvers it is reducing the murmur. And we have localized the disease to the cardiovascular system, and there is a classic phenomena on the left ventricular pressure tracing, and we need to look at the sign and the phenomena. Anyone in the audience wants to answer, or you want to see the next clue? Okay, they are ready with the next clue. So the left ventricular tracing that we were, pressure tracing that we were talking about, is now shown to you on the screen. You have to mention the phenomena and give us the final answer. I have another clue if you want to look at it. Okay. The clue that we have next is, the final clue is this. Do you want to give an answer, or should we let it be? Do you want to mention the phenomena? We need the phenomena. Actually, the question was, no, that is not what we have. Okay. So anybody else wants to give it a try for academic reasons? It cannot be passed. There is no score for you, but so they don't get a score. But anybody wants to answer this question? So they get a -5 for their incorrect. Okay, they get a -5. They get a -5. Yes. So we have a very good team of scorers who is already on the mark for minus marking. Now anyone wants to give an answer? Try. So the answer is. The answer to this question is Practise sign. It is basically after PVC, in cases of HOCM, the atrial pressure drops in the next subsequent beats. Normally, what happens after PVC is your left ventricle is carrying more blood, so contractility should increase normally, and AV pressure should increase. But in these cases, because there is outflow obstruction, the subsequent pressures in the atria, they decrease. And this sign is called Practise brown word sign. So you got the idea correct, but the phenomena that we wanted, you could not answer. That's why we are not giving you any marks. Okay. So Team E. Good afternoon, everyone. I'm Naman from AIMS Delhi. I'm in 3rd year. Good afternoon. I am Shubham Agarwal from AIMS Delhi, and I am from 3rd year. Okay, beta, welcome, and I'll request everybody to give them a warm welcome to the institute. Now, before I show you the first clue, let me just get it on the screen. Are you ready now? Okay, this is the first clue. 75-year-old man diagnosed with a disease characterized by bilateral, proximal, and progressive muscle weakness, erythematous rashes over the metacarpophalangeal joint, around the eyes, presented to emergency department with primary concerns of dyspnea on exertion, constant non-productive cough, progressive worsening for the last 2 weeks. Symptoms are fever, chills, decreased appetite, dizziness, and he had a body temperature of 100 degree Fahrenheit, heart rate 108, respiratory rate 28, oxygen saturation 87% on room air, peripheral BP measurement of 135/92 millimeter mercury. So you can see a disease which is more widespread. That is the first clue. You have muscle weakness, erythematous rashes around the eye. Dermatomyositis. You want to straight away go for the answer? Do you think it is advisable? Okay. So you have -5 and now you're going to the next clue. Okay, -5, but we go to the next clue. Okay. So next clue has a CT image, and you can see a pulmonary finding shown to you. Next clue, sir. Okay.
So now we have to put what we saw on the first image and the second image together. So the third image is the pathology. Third image is the pathology. Yep, sir. Okay. Do you want to answer? No. Okay. So anybody from the audience or any other participants wants to give it a shot? So the answer that we are seeking is cryptogenic organizing pneumonia, and what we saw on the CT is the atoll sign. There you see the reverse halo kind of a sign, or we also call it atoll sign, where you have a peripheral consolidation and a central ground glass, which is reverse of what we see in invasive aspergillosis. So this is the reverse halo kind of appearance. That was the clue, and probably they had a good thought in that the underlying disorder was dermatomyositis. So what my feeling here is that because in the first slide we had not asked them what is the final that what you are going to diagnose. So on the basis of that slide they were on the right track. So what my feeling is, we should not deduct their marks. Even if you don't go give them any marks, they should not go -5. Because they had picked up the underlying condition well, but in this question we had not asked them what is the final diagnosis. So on this slide, this is the maximum they could have actually told. So we are not deducting your marks. Okay, happy? Okay. So team 6, team F. Yes, beta. Introduce yourself. Good afternoon, sir. I'm Vanshika from LHMC. I'm Nyasa from LHMC, and we both are final year students. So very good, beta. You've reached so far. I will request all of the audience and everybody to welcome them with a round of applause. Okay. So in the next image, I will just quickly show you the first clue. So you can see we've kept it symmetrical. The first clue is always a clinical history. 17-year-old brought to medicine OPD with complaint of loss of sensation in both the hands. Parents complained the child does not feel anything while touching a hot object or fire, causing recurrent episodes of burns on the hands of the child. Initially, sensory loss was limited to left hand only. He gets a headache when he coughs. On examination, sensory deficit on the nape of the neck, shoulders, upper arm, loss of reflex in the upper limb, decreased tone in the leg muscle, touch and vibration sense preserved. On further questioning, the doctor got to know that the patient was born with a small skull. Age of 17, and you have sensory deficit on the nape of the neck, shoulders, upper arm. Loss of reflex in the upper limb, decreased tone of the leg muscle, touch and vibrations is preserved. Okay, they want to go to the next clue. So next clue will be an image just like every time. Now we are going to show you an image of the spinal cord. This is, you have to look at the body part yourself. Okay, whatever I said, don't take it seriously. Sometimes it's a joke also, okay? It could be, you know, a CT abdomen also, who knows? Okay. The time is about to get over. Okay. They want the next clue anyhow. Okay. So next clue is the second image. So this time you have both the radiological images, no pathology image. So I'm also more relaxed. Okay. So just a clue for the students in the team F. This is the same image which was asked this year in NEET PG exam. This is the same question. This was asked this year in NEET PG exam. Okay. Do you want to give it a shot? The time is running almost out. Arnold Chiari type 2. Only if you could have said less, we would have given it to you. But I am sure we can't give it to you. We can't give it to you. So -5? -5. We can't give it to you. So what was the clinical history suggesting us? Anybody wants to now take a plunge and take a guess academically? Syringomyelia. So everything was pointing towards syringomyelia, and they also had a small skull.
So small posterior fossa, and the image now is showing us, the image that you see on the screen is showing us tonsillar herniation. So tonsillar herniation, syringomyelia is Chiari type 1. Type 2 has spina bifida, type 1 has syringomyelia. So this was Chiari type 1. So unfortunately you could not get it, but this is the same question that was asked this year in NEET PG exam. And it is a very important thing to keep in mind that now the pattern is become like this in the real exam also. Clinical story, radiological image, pathological image, correlation. More radiological image, less pathological images, but they are asking in NEET PG like this. So I think this is the end of the round. Okay, so I'll ask the team to just give us the score on this wonderful interactive board. देखो लेकिन जब एग्जामिनेशन में दोनों तरफ मिला है ना, एग्जामिनेशन में दोनों तरफ मिला है. Okay, the scores have been updated. Team A is yet to open their account. Team B has opened the account but in the negative direction, -5. Team C is 0. Team D -5. Team E 0. Team F -5. So what we see here is that people who are silent are actually winning. Okay, so be careful of the negative marking in the subsequent rounds. I'll request the team to introduce the second round. The second round is, it's all about perception. It's a connect/AI round. So it will be either a connect questions, 4 images will be given. You need to connect those 4 images, find what is common in between them, and then come to a conclusion. That's the final answer. Or it will be an AI based image. So like an AI image will be provided, it will have multiple aspects to it, and then you need to again come to a, it could be a diagnosis, it could be anything, it could be a word, phrase, anything, and you have to come to that. These are the rules. And we have just 3 questions. Now the chunk of it is that we have differential marking. We have 6 teams and the questions are open to all, and the marking will be 5, 6 minus x, where x is the number of teams who answered it correctly. So if all of you answer it correctly, none will get anything. If you all answer it incorrectly, again, no one will get anything. If one team answers it correctly out of all the 6, they will get 25. If 5 teams answer it, they will get 5. So that's how it goes. And we have only 4 questions. Okay, so what we are going to do is we are going to show you some images which have been created from AI based tool by giving them the prompt. So whatever prompts we have given them to create the image are your answers, but we are not telling you the prompts, we are showing you the image. You need to find out the clues, find the diagnosis, and the marking will be based on the differential, based on how many people are giving the final answer correctly. Okay. But if, okay, but anybody gives the final answer better and others are only giving the, so then we'll always select between you. So it's a competition at the end of the day, you know. So, you know, are you ready? On your marks, get set, go. And let me show you the first image. So I know the boys are looking at the brand of the wine, but look at other things as well. So there's no need to speak the answer, just write it down. The team is now ready to pounce upon you so that you are quickly writing. The timer is ongoing. You have 1 minute, and out of which 20 seconds you've already used. Okay, have you written your answers? Okay, I would request the team to quickly capture their answers. Even if it is a blank sheet, take it away. So the image in front of you has some images which will be added up to make a diagnosis. B is correct. A. B is correct, yes. Okay. B, D, F correct. B, D, F are correct. A is also correct. Okay, so the 4 team time is over now. Four teams got it correct? Yes, sir. So we 5 into 6 minus 4. A, B, A, B, D, F, A, B, D, F, okay. Right, plus 10 to A, B, D, F. So all the 4 teams who have answered it correctly get plus 10 based on the formula. So I want you to look at the image again
And I'm sure you could see the champagne bottle. I know all the boys were able to identify it. And onion, I'm definitely, you can see the onion there. So you can see a hammer also, hammer placed in next into the toes. So we are actually trying to talk about the hammer toes, onion bulb formation due to concentric formation of Schwann cells, inverted champagne bottle legs, and you can also see a claw hand. What do you think? The answer is Charcot-Marie tooth disease. We could see the hammer toes, claw hand, onion bulb formation, and inverted champagne bottle legs. So this was the theme. I'm sure after this you get more wiser for the second question also, that how to read it. It is always a good idea to read it aloud, and you can break the code of the AI by just reading it aloud in English. You will get to know what they're trying to say. Okay, ready? With the next image, are you ready? Okay. Okay. So we need to know what is the common binding in this images, common binding in all the images. There is something common about all the images. The time is running out. Please be very quick to write down. And we have almost run out of time. So I'll request the invigilators to quickly jump on these pages and take it away. Don't tell them the answer. B is correct, or A, B, C. anyone else? ABC plus 15 to ABC. So anybody would want to explain the findings? I think which team got it right? A. A, B. Okay, B. Can you explain the first finding? What do you think? Rokitansky-Ashkoff sinuses seen in adenomyomatosis in the gallbladder. B. Second image. Teratoma. What do you see? Rokitansky protuberance. Okay. And B again. A. What do you see in the third image? That's not a right good idea. Okay. Anybody wants to tell the third? That is. What is team C? What did you think about the third image? Yes, Mayer syndrome. Yes. And what is the fourth image? Fourth is a tough one, I think. Fourth is the it's a technique of autopsy, Rokitansky technique of autopsy, which is in situ autopsy. So all the findings that you see in the image have a common name with them, Rokitansky. So answer was Rokitansky, and we are glad that 4 teams were able to answer it correctly. 3 teams were able to answer it correctly. So 15 marks now for these 3 teams. So it is an interesting round. But the second question, the images were not AI generated. They were generated by our AI team here. They were quiz masters. They are also like artificial intelligence. So the third question, you have 4 images now. Name the organism which connects the 4 images shown to you. There are 4 images, and there is a very important date also written there, and someone working on something. You can just connect them and give us the answer. Are you ready now? The time is almost halfway up. By the time the teams are writing the question we have for the first year who have just joined MBBS. Can you raise your hand that you have just joined MBBS? Yes. Are you happy? So I would request everybody to give them a round of applause. They have reached so far in life. This is a big landmark. We welcome you with an applause. And I would like to again remind you that although when you join a medical college, the time is up. I'll request the invigilators to pounce on their answers. But you might feel कि सही किया गलत किया, लेकिन long term में जब पीछे मुड़ के देखोगे तो अच्छा लगेगा. एक बार जब आते हैं MBBS में ना, एक बार लगता है कि यार आ गए, जीत गए. यहाँ आके किताबें, टेस्ट पेपर, सीनियर, खतरनाक सीनियर
and you get to meet everybody, but gradually you will love this place, you will love the institute, you will love your branch, and when you look back at life, you will be happy that you took that decision. Hai na? Hanji. None of the teams were able to put the things together. So anybody from the audience wants to answer it? I am sure many of the audience must have done all this for your PMT. No dates, etc. No, you don't remember. Okay. So let me just show you the clues. The first image is Henrietta Lacks statue in the Bristol city. The second image was polio virus growing in HeLa cells. 25th April 2016 is the date of the switch. And the fourth image was Salk working on the polio vaccine. Okay. This was the man who did not patent his vaccine. He did not patent his discovery, which is one of the, I thought that is what you might have studied in school also, that scientists who did not patent and did not make money out of the discovery, their idea was science is for general public. So that is why he did not patent it. Okay. So next question, are you ready? So final question of this round, you have to look at the images, and I'm bringing the images in front of you now. How do you connect all of these? How do you connect the images shown to you? There is a CT image, there is a world map, I don't know, some person looking at us. How do you connect these into a single word and give us the answer and take the marks? The time is almost halfway through. Okay, almost gone. Time is gone. Please write anything that you are thinking. We see the team from LHMC talking to each other very rapidly. I'm sure they're thinking about something. But the answer that I have is very small. You know, I don't know what you're talking about. Okay. And so next we should ask them a physics question to the first year students. Yes. Very good. At least they should feel part of the game. Yeah. Okay, the time is up. I'll request the quiz masters to take over and see their answers. Anybody who's got it right so far? Team C has got it right so far. Very good. Only Team C has got it right so far. So Team C, what do you think? What have you written? Signet. Yes. How did you make out your mind? Only radiology. I'm so happy. Yes. So the answer is signet ring. Seen in bronchiectasis, this is a map of Japan. Japanese classification is used for gastric adenocarcinoma. You see signet ring in that also. And the person is Ernst Krukenberg. On the Krukenberg tumor you also find signet ring. The signet ring was the final binding. And I would say Japan clue was actually very indirect, but I think I'm happy that they were able to get it up. The answer is signet ring. Very good. So plus 25 now, because they were the only people who got it right, so plus 25. And that is the advantage of short subjects. Sometimes you get a bonus answer. Yes. So now we will go to the next round. I'll request the team to give us the score of the team so far and the rules of the next round, which is in the doctor's shoes. So moving on to the next round, I hope you're enjoying. This is in the doctor's shoes. So this is a purely clinical round. So each question in this round consists of two parts with the following rules. There are two parts to it. The first part is shown to the team. If the team answers it correctly, they earn plus 5 points and they proceed to the second part of the question. If they answer it incorrectly, the question bounces to the next team. Bounces means it will be passed to the next team. There's only one pass, just the exact next team.
Pounce is available for the first part. Teams that pounce and answer it correctly earn +10, while if they answer it incorrectly, they earn -5. Pounce means the question will be shown, and for example, the question is directed to team A. And the rest of and they will be on 1 minute to answer that question. Now, if the rest of teams think that they can answer that question, they can just raise their hands and say pounce, which means they have to answer it within 20 seconds. And if it's correct, within 20 seconds they answer it and they get it correct, it's +10, wrong -5. Self pounce nahi hai. So A को अगर directed है तो A cannot pounce. It's B, C, D, E, F which can pounce. And जिनको directed है उनके लिए first part भी है, second part भी है. Pounce is only for the first part of the question. Okay. For the directed team it's +5 and 0. अगर गलत दिया या नहीं दिया तो 0. Now for the bouncing part. Bouncing is again for the pounce वाला अलग है, bounce वाला अलग है. So if there is no pounce and now the directed team is not able to answer, then it bounces to the next team, and for that they get +3. It's clear, and there will be 2 questions, 5 + 5. Any doubts in this? First you will be shown 1 question, which is allowed for pouncing and for direct. Then whether they can answer jinka directed hai, then they will be shown the second question. And the bounce has to be done once the first team is unable. Immediately when they see the question. Yes, sir. Okay. After you finish reading, then 20 seconds after that. Okay. So we are going to show you the first question. This is directed to team A, and all other teams it is open to pounce as well. So are you ready? Are you ready? Okay. The second part is of 10 marks. As written. Okay. Second part will be of 10 marks. First part is 5 marks. And you can see now, we can already see team C is leading with 40 marks. Team A and B are 25, team D is 10, E is 0, F is 10. So with this, I'm going to show you the first question of this round. So this is about Angelina Jolie. I am sure the new MBBS students are interested. An obstetrician was gossiping ill about her husband with her PG residents. Suddenly, lady comes screaming in labor. She is G2P1 L0A1. She was sent to LR. Dr. Angelina on PV examination claimed obstetric conjugate was 11 centimeter. She immediately took her for emergency cesarean. Which of the following is a correct statement? A, B, C, D, 4 choices are there. Any one of them is correct. You can bounce also. The patient was suffering from pelvic contracture as diagonal conjugate was less than 12 centimeter and cesarean section is the next step. B, she started cesarean as woman has gone into arrest of labor and obstetric conjugate was less than 12. She should have gone for vacuum delivery. It seems what she did was wrong. Okay. Pounce window open. There were 4 choices. There are 4 choices. Do you want to, anybody wants to pounce, or we keep with the team A? The pounce window is about to close. Anybody wants to raise their hand? Closed. Okay. So nobody gets to answer but the directed team. Yes. You want to answer? You have full 1 minute to answer. Take your time. Discuss everything, you know, what you're going to have in lunch also. You have full 1 minute, 60 seconds. A, B, C, D. Anything you want to mark. Is there any negative marking to this round? So, you know, just inky, pinky, ponky, you know, do it. Yes. Next part you will only see if you answer it correctly, otherwise we will not show it to you. Are you ready to answer? We are waiting for you only, beta. They are saying option A, which unfortunately is not correct. So I'll request anybody else who wants to give it a shot in the audience or anybody sitting in the teams. If they don't attempt it, then bounce over. Then तो एक option ही कम हो गया फिर. हाँ. They're saying option D. Can you think of it? Why what she has done seems wrong? Okay. Okay. So we'll show you the next question first. What was the question that we were about to show them, and then we'll tell you the answers. So the second question was, what is the relationship between true conjugate, obstetric conjugate, and diagonal conjugate? This was the second question, which nobody gets to answer because they did not answer it correctly. So let me just give you the final answers.
So option D is correct because we cannot calculate obstetric conjugate on PV examination. The question was that she had done a PV examination and she says that there is the obstetric conjugate is this value, but you could not have calculated. Hence the claim of the doctor is wrong. What is actually calculated by her on PV was the diagonal conjugate. So cutoff are different. For DC it is 12, OC it is 10.5, TC it is 11 centimeter. So the relationship between obstetric conjugate is diagonal conjugate minus 1.5 centimeter. True conjugate is diagonal conjugate minus 1 centimeter. True conjugate is more than the diagonal conjugate, which is more than the obstetric conjugate. This was the question all about. So sometimes the most weird answer is the answer. The answer was actually none of our. She was not wrong. But unfortunately, you cannot get it right. So we'll now give a direct question to Team B. Team B, are you ready now? Okay, let me show you the direct question here. This is a thyroid surgery being performed. What will be the definitive marker of non-recurrent laryngeal nerve intraoperatively? Pounce window opens. Pounce window is still open for next 7 seconds. Make it 5. Are you ready? And the Pounce window closes. So Team B, this is your chance to take an answer. Intraoperative कैसे बच रहे? Intraoperative कैसे बच रहे? Do you want to give it a shot? And the time is... I think we cannot give it to you, so no marks, nothing taken, nothing earned. Anybody else in the teams wants to give it a shot? This line is written directly in Bailey and Love in surgery textbook. No, not bounce, but you want to take a shot just for the academic purpose? No. So we'll go to the next question. The next question that was supposed to have happened if they had answered it correctly was, if recurrent laryngeal nerve is injured during the surgery and the transected ends are identified, they can be re-anastomosed. In event the length of the nerve is excised, what may be the, owing to the invasion by the malignancy, what may be the next possibility? So these were the two questions that were on the thyroid surgery. And the answers were, latency reading on the nerve monitor is unexpectedly short on the right side in case of a non-recurrent laryngeal nerve injury. And anastomoting transected end of recurrent laryngeal nerve with ansa cervicalis is the answer for the second part. So these are some questions directly from Bailey about the thyroid surgery, but sometimes you may not be reading Bailey and third year, it is okay. So we go to the team, but maybe you should be reading, it's a good idea. So Team C, are you ready? Team C, direct question for you now. I think there is a video to be played. Okay. Okay. There is a video to be looked at. Jesus says, our friend is asleep, but I am going to awaken him. When apostles misunderstand, he clarifies, he is dead, and for your sake I will awaken him. Name the condition which is based on this biblical story. I'll play the video once more. Pounce open. Pounce open. Pounce team A's, B, D. Anyone else? Pounce. Okay. So 3 teams have pounced. So okay. Pounce closes. A, B, D, and F have pounced. okay. So which all teams get it correctly?
You have to name the condition on which this biblical story is based on. B and D got it right. B and D got it right, and they are yet to see the A. And the time is up now. So to D, A, B and D get it right. Now I think there's a chance to go for the next question also now. Now, so they have to answer. It's directed C. Okay. Yes. Okay. Yes. Should we give them, or should we have to speak up because others have given the name? We need the name. नाम में सब कुछ है, ये सब अब नहीं दे पा रहे हम. Okay. So, but then the next question will go to the people who have bounced. They are not attempting. Okay. So you are saying you don't know? Okay. The time is also up, and I think okay. Now it will be bounced to F. Why F? Because they are But okay, they are the next. Okay. Okay. They pounced it. Okay. Sorry. E के बजाय. Oh, yeah, there we go. Okay, so I'll show you the next question now to the team E. Team E, okay? We need not tell them the answer right now at this stage, huh? Okay. It's bounced to them. Okay. They will answer this first. Okay, now team E, you want to give the name of the condition? You want to give the name of this condition? Pass, they're saying pass. Okay, now F. There was just one part. Okay, there's just one pass. Okay. So the next question actually that we had was okay. There is a phenomena with the same name. What does it mean? So there's a reflex and a phenomena with the same name. That was the second question. Anybody wants to try now? So the answer that we have is the Lazarus reflex and the Lazarus phenomena, which is the spontaneous return of circulation after failed cardiopulmonary resuscitation. It typically occurs minutes within after the CPR is halted. So I think 3 teams got it right, which is a very good answer actually. Very good. So I think we have one more question in this round. Yes, it's for every team. So okay. It's team so C, D, E, F, L, 3 और question. Now we have the question for team D. Ready? Direct question. Yes. A patient comes to dermatology OPD with complaints of extremely itchy plaque on the right leg. On examination, the plaque is edematous, surrounded by papules, vesicles, and exudate. Some amount of crusting and scaling was also seen. Dermatologist asked for relevant history and examined the plaque. Dermatologist wanted to establish the diagnosis of X and determine the cause of the disease. He ordered a test and details of which are shown to you. Name the test. Pounce window opens. Pounce okay. B. Team B. Pounce F. You need to name the test to get the marks. Pounce window closes. Now we go to the team D to give their answer. Yes, sir. Team D, what do you think? So you have to just name the test. बस दो A and F. D के लिए directed है. B also. B and F. Sorry, B and F. B and F. You have to name the test, then we will give you the subsequent question. It is a very standard question. I'm sure you must have seen it somewhere. Are you ready to do it? And the time is up. Time is up. Okay, now name of the test is right with? Wrong.
It's a modification of patch UVB के साथ. Patch Okay. test में we won't get UV radiation. वहाँ पे ये blue है important. ये simple बस patch कर देना है, मतलब बस इसमें सिर्फ एक ही रहता है patch, इसमें 2 patches use 2 patch. So what is the marking now? So now the next question that we had was Team B got correct. Team B got it right. They identified the test correctly. F did not identify it correctly. So now what we'll do is we will show you the next question, and that will go to the, it will not go anywhere, just for the academic purpose. Interpret the results of the test shown. Day 0, day 1, day 2, C, X, Y, Z, and the patterns are shown to you after and day 0, and then you see UV radiation that the team was mentioning written in the question test itself. This was the clue. When you look at the previous image, you saw the UV radiation which you missed. So you have to give us the correct full answers so that we can consider you for audience prize, nothing else. मतलब X, Y, Z का क्या interpretation है? Condition से क्या होगा? X जो है वो UV light की absence में antigenic नहीं था, but जब UV light गिरी है तो वो antigenic हो गया है. और बाकी दोनों जो है वो बिना UV light के पहले से ही antigenic वो आ रहे हैं. और Y और Z में difference क्या है? Z में जो age में बढ़ गया है, तो photo aggravation होता है. Okay, so the correct answers that we have is photo patch test for dermatitis. C was the control, X is the rightly mentioned photoallergic dermatitis, Y was allergic dermatitis, and Z is allergic dermatitis but with photo aggravation. So in the Z you could see the photo aggravation also. So once you are clear with this, we go to the team E now. E. Team E, direct question for team E. Question number 5. We will show you a gate and you have to identify the gate. You have to identify the gate being shown in the video. You have to look at the gate. It is a symbol of internet lagging. This is common gate nowadays when the Wi-Fi is not available. Wait. Okay, now you can see the gate. You have to identify the type of gate. Bounce also. Cell bounce is not allowed. Okay, they want to see the gate again, and I'll definitely show it to you again. What is happening? In which you have to look at the gate. Yes. Are you ready? Okay, how many rounds are left? The last is rapid fire. Total 3. We take a 5 minutes break after this. We can just take a 5 minutes break. So after this round, we'll take a 5 minutes break also. Hai na? Okay. Are you ready now to answer a pounce? The pounce window is already gone, so your answer to time is going on. Do you want to say? What is the answer? They are saying ataxia bezier. Very good. So I'll show you the next question so that we can give you the full marks. They are giving it correctly. Then the okay, but I think they were right only. Which psychiatric disorder? Convergent disorder. We give them the marks. I think they have identified the tough gaze already. It was ataxia bezier gait seen in the convergent disorders in hysterical patients. Very good. They get full 15 marks. This is the first team to get full 15 marks. They deserve a round of applause. And now the final question of this round, after which we'll go for a tea break. This is question number 6 for the team F. Here's described a test which has following 3 components. Impaired vestibulo-ocular reflex associated with corrective saccade, evaluation of nystagmus, a test involving covering the patient eye and observing the vertical or diagonal movement of the eyeball as soon as the eye is uncovered.
you have to identify the test with these three components. Pounce window open. Name the test. Anybody wants to pounce? And the pounce window is now closed. Final few seconds for the team F to answer. Team F, what do you want to answer? Negative marking. There's no negative marking. Answer anything. What is the name of the test? Okay. So I think we will let it be. Anybody wants to try for academic purpose because you did not pounce on it? Anybody wants to name the test? Okay. They are saying hints test. Okay. So let us look at the next question here. What is the application of the test? So it is used for central and peripheral vertigo, which is absolutely right. They deserve a round of applause, but no marks to be won. And we'll see if our team has any audience prize. Any audience prize? Okay. We have chocolates now for you because you're answering good, but we have chocolates for you. Big round of applause. And first year is now finally woken up. They are saying, sir, chocolate thi pehle nahi bataya. Okay. Just counting the price that you are going to get, and I can see it is substantial. I got a view on the cash prize that they are offering. It is substantial. So on this note, we start with the final round. The final round is going to be a bidding bonanza. The penultimate round. There is one more round after this. Final two rounds are left. Bidding bonanza. This round will have 3 questions. And a hint will be shown before each question. So hint will be shown, you have to bet your points accordingly based on that hint. And then if you get it correct, you will get those points. If you get it incorrect, minus half. So hint will be shown before each question and you will have to place a bet for the question. The previous points are freezed. So like after these 3 questions, they'll be either added to your score or subtracted from your score. You have to bet between 20 to 100 points in the multiples of not 5, 10. 10. For correct answer, the bet will be added to your score. For incorrect answer, half of the bet will be reduced from your score. And after this, we have the rapid fire. So like people who are little lagging behind, they can actually cover up in this round. So this is about how confident you are and how much you have the ability to gamble. The gambling is between 20 to 100. And in the multiples of 5, you can place any of the bet. Let us show you the first bidding question. Hint. I'll show you the hint. Okay, but don't place the bet on the hint. You have to hear the question and then place. Hint they have to bet. Okay, on the hint. Okay. Okay. So ready? On your marks, I'll show you the first hint. On this hint, you have to put your bet. You have to write the number of bets on your sheet. We'll come and check. You have to write how much points are you ready to bet. Are you ready? What is the bet like? 20 for all? A, B, C, D, they all are betting 20 each. Okay. Team E and F are betting 30 points. Team E and F are going more gutsy on it with 30 points. Yes. Are you ready now for the question? Question is, a 22-year-old woman presented with complaints of recurrent spotting after sexual intercourse, occasional clear vaginal discharge for past 3 months. She denies any pain, itching, foul-smelling discharge. Her menstrual cycles are regular. She has been on oral contraceptive pills for last year. On PV examination, cervix is soft and non-tender.
On PS examination, ectocervix appears erythematous with a well-defined exposed columnar epithelium around the external os. No mucopurulent discharge or cervical lesions are seen. I'll show you the question. Based on the history and the image, what is the diagnosis? Based on the history and the image, what is the diagnosis? Okay. Now, are you going to write down your answers? You can write down your answer in this 1 minute because there are 5 people who have put their bets. All have put their bets, so all of you have to write something. They want to see the previous slide again. This is very risky to do, but I'll take the risk. Sometimes it goes forwards. Okay, so we go back to the hint also for your comfort. This was the question. Are you ready? And we have 15 seconds left. Almost 10. And the team is ready to check your answers. Half of what you have bet will be deducted from your scores. And I think after this round, most people will be left with negative marks only. By the look of the invigilators and people who are checking your answers, they look very disappointed. Hanji, tell us. Only team B got it wrong. How many did you bet? 20. So minus 10 for team B. And which teams got it right? A, C, D, E, F got it right. So they get full marks what they bet on. So that is a very interesting round. I think the games and the fate is changing now. And the image was this. So based on the examination and the history, the diagnosis was cervical ectropion, which I think most of the teams have got it right. It is a condition in which the cells from the inside of the cervical canal, known as the glandular cells, are present on the outside of the vaginal portion of the cervix, which leads to recurrent spotting postcoitus. Why it is not a cervical cancer? Because there is no lesion seen and patient is in younger age group. Why it is not vaginitis or cervicitis? No itching, pain or discharge was mentioned in the question. So I think this is a good round. Let us have the next question. Now I would encourage you to put your higher bets. You can go up to 100. Who knows, this could be your day. Who knows, it could be your day. Are you ready to see the hint? Get the gambler in your back. Maybe if you are the team who's coming last, for you it is the time to put 100. Either win or go back home. Anyhow, we were not winning. You done with your betting? Okay, have you put your bets? All teams have put 20 marks. Okay. Are you ready now for the question? Okay, it's a longish question, so be careful. In the game of treasure hunt in VMMC during the annual fest Nirvana today, for the final treasure, a treasure chest has to be opened, but it is locked by a rearranged puzzle. And you have to arrange the following anatomical structures from below to above in the human body to get a 5-digit code to open the treasure chest. You have to give the codes: stria medullaris, ganglion impaired, Cockett's perforator, linea terminalis, lamina terminalis. Dr. Mask Kaur and her team have just completed the penultimate round. By using your anatomy knowledge, help Dr. Mask to win the game and be the next Nirvana star in solving the rearranged puzzle by using your anatomy knowledge. You have to arrange these 5 structures below to above, and each structure comes with a digit. You have to give us the final digit. Write down your digits in your papers. The time is running out, but we are very liberal with the time because this is a question specifically created to remind the audience about the annual fest in VMMC Nirvana.
Okay, the time is almost about to get over. Start writing, and I request the team to check their answers. Be very strict with them. Time is up. Anybody in the audience also wants to give us an answer? None of the teams have got it right. All of them get minus 10? Minus 10. Okay. So the correct sequence that we have is, and I request the team also to help us to, it is 3 cocket perforator, then above it we have ganglion impair, then we have the linea terminalis, then lamina terminalis, and then stria medullaris. I'll ask him to explain as well. Cocket perforator is the group of veins that connect the posterior saphenous vein to the posterior limb. And then we have the ganglion impar that is located at the sacrophyseal junction. And then we have the linea terminalis that separates the greater and the lower pelvis. And then we have lamina terminalis that forms the anterior border of the third ventricle. And then we have stria medullaris that form the superior medial surface of the thalamus. That is present on the superior medial surface of the thalamus. So I think a very good question, and the code, the key to open the treasure chest for you will be 32451, which none of the team got it right. 32451 was the answer. So we go to the final, hint, I think, and this is where you place your bets. The hint is this. Once you look at the hint, you can place your bets. Are you ready? Okay, so we have your bets. Each. 20 is the bet by all the teams. Are you ready? So, okay, this is a long question. We are giving you 2 minutes. Okay. And the good thing is that I see all of you are very sporting and all of you are betting your points, which is very good. Many times when we go to the bidding rounds, many people don't even bet, so it's a good idea. So let's see the question. You take up a case of a child with history of congenital heart disease. His vitals are recorded. Pulse is given, mean arterial pressure is given, RR, respiratory rate, temperature, JVP, all are given to you in the image shown to you. Auscultation shows a wide S2 split in both inspiration and expiration. Findings are hemoglobin 13 gram%, PA2 is given, CA2 is given, and I want you to look at the pulmonary oxygen consumption is given 310. Echo shows a ostium secundum defect. You are asked to calculate the cardiac output, that is the blood flowing in the systemic circulation, given the left atrial and the pulmonary arterial pressure are 8 and 20 milligram respectively. Hint. PVR is equal to SVR divided by 10. So this is what is given to you, and you have full 2 minutes. You need to calculate the cardiac output, that is the blood flowing in the systemic circulation. So we have some complex calculations for you to do. And we need the final value. And this is the final question from the betting round. After this, we have only one round left, which is a rapid fire. So are you ready? Okay, the first minute is about to get over. All your square roots and cube roots that you are trying to calculate, please hurry up.
You have to calculate the cardiac output. We need the value. We need the value. That is when we'll give you the marks. Are you ready now with your answers? Some students are saying, sir, I forgot my calculator. Okay, almost the time is over. On 15 seconds, around 20 seconds. Get ready with your answers, with your calculations, with your answers. And the time is about to get over. So the time is up. I would request you to submit your final answers. Okay, did any of them got it right? No, none. Team 1 has got it right. Team A has got it right. They get full 20 marks added to them. Everybody gets -10. So this is a very good defining question with your maths. So I'll show you the answer and I'll request you to explain yourself. Okay, so the answer is 3.56 liter is the final answer. I think they've done it right. Can you explain how you reached to this answer? You used which principle? They used the Fick's law first. Then they calculated the pulmonary blood flow. They deserve a big round of applause. It was a very complicated calculation. I'll request the team also to give some final words on it. So basically you need to calculate the pulmonary blood flow based on the Fick's equation, which is the pulmonary blood flow divided by the arteriovenous content difference. So 19 and 14 दिया था, तो वहाँ से 5 ml per deciliter आया, and what is given कि pulmonary oxygen consumption is 310. So we know pulmonary blood flow is 6.2. Now the catch in this question was ostium secundum defect. So एक shunt बना हुआ है atria के बीच में, and since ostium secundum means left atria to right atria shunt. So for example, right ventricle has x plus y volume, so x plus y घूम के x will come into the left ventricle, y will again shunt back into the right atria. So y volume will be going back. So that was the concept behind it. And this PAP minus LAP is based on the Ohm's law जो हम 12th में पढ़ते थे, which is voltage is equal to current into resistance. So voltage means pressure difference, current is the blood flow, resistance means peripheral vascular and pulmonary vascular and systemic vascular resistance. So it's that basis. And now you have to solve and get the question जो cardiac output LV की है, RV की नहीं, RV will be x plus y. So LV क्या cardiac output जो systemic circulation में जाएगा, that is 3.5. Kudos to team A. Well done. So now we come to the final round of the quiz, which is going to be the make or break. I'll ask the scorers to update the score on the wonderful interactive board that they have here. And so before we look at the score after the bets, right now the score were Team A plus 15, Team B plus 30, Team C 0, Team D 15, Team E 15, and Team F minus 10. So let's see what happens after the betting round scores are out. So far, Team B is leading, and Team C is yet to open the account. So let us see how it changes. And we are now at the final point where we will only have a few rapid-fire questions. And okay, okay. Have they gone to this? Okay, so that there is no cheating. Yes. Okay, now you can see how the bets change your life, how gambling changes your life. Team B started at plus 30, now they are at minus 30. Team A started at plus 15, they are at plus 30. Team C remains at 0, there's nothing added or subtracted. D is at 0 now. E and F are at 10. Okay. So now we come to the final round. And for the final round, there is a complex set of this is race against time. There is a set of instructions which I'll ask the team to give you.
rapid fire round. We have an online buzzer for this rapid fire round. There are 15 questions in total, the answer for which is a single word. And you have that online buzzer, we'll just get you logged in. And you have to press that buzzer. We'll go for a trial round so that everyone gets a trial to how to place the buzzer. And via that, we'll know who pressed the buzzer first. If you answer it correctly, now please follow these instructions first of all. Just a minute. We'll keep the answers, that is easy. Now we'll keep them. +4 -1. Everyone has joined. Okay, so ready with your buzzers and the excitement is on. I will. I think we can try both. So as soon as I say answer, you can unlock. Okay. Ready? So these are the rounds. So there are 15 one-liner questions. You have to press the buzzer. If you press the buzzer, +4 for correct, -2 for wrong, or even if you don't answer, but you press buzzer, it's -2. If the first team gets an incorrect response, second team is allowed to answer with marking scheme is +2 -1. Okay, this is the final round. कुछ भी नहीं होगा फिर. Okay, no plus, no minus. Ready? The marker is, the buzzer is locked right now. It will only open when I say answer now. Okay? Ready? Ready for the first question? Are you ready? Okay, let me show you the first question and get ready with your buzzers. But when I say now, okay, be very careful. Don't unlock it before that. Okay, ready? Okay. A syndrome with atrial septal defect with mitral stenosis. Answer now. Team 3C. Yes. He says Lutembacher syndrome, which is absolutely correct. Very good. Okay, next question. Ready? On your marks. Are you ready to look at the next question? Yes. Chief elevator of the lower jaw. Answer now. She says lateral pterygoid and we do minus marks. Yes. Then any other team which answered now? Which team B? Yes. Okay, no other person press the buzzer. Anybody in the audience wants to answer? Chief elevator of the lower jaw. Audience. The answer is masseter. Okay. Ready? Question number 3. Triad of punctured lacerations, abrasions and contusions. Answers now. Name the triad. He says Marshall's triad, which is absolutely correct. +4. Which reaction is the only endogenous source of carbon monoxide? Your answer now. He says breakdown of hemoglobin, which is absolutely correct. +4. Okay, are you ready? Watterson shunts connects pulmonary artery connected to. Answer now. She says ascending aorta, which is absolutely correct. Well done. Aortoiliac obstruction with importance in a child is called as now. Perfect. +4. Okay, question number 7 now for you. Dash is also called as death warrant tumor. Answer now. Easy question actually. Anybody? Anybody in the audience wants to give it a shot? If the okay, one buzzer. Team E. ENT's death warrant. Okay. Anybody else in the audience wants to give it a shot? The answer is glioblastoma. Glioblastoma. Okay. Question 8. Are you ready? Question 8.
Voltage-gated calcium channel antibodies play a pathogenic role in DASH, which is also associated with small cell lung cancer. Your answer we need now. Team E says Lambert-Eaton, which is absolutely correct. It is Lambert-Eaton myasthenic syndrome. They get +4 marks. Very good. Question number 9. Double bleb sign on ultrasound invariant in pregnant woman signifies dash in the fetus. Question is not right. So there's some error here. So answer now. Yeah, I think they're right. They're right. Yes. +4. In a given video, a word is repeatedly used. Under which section of BNS definition of that word comes? We'll play the video once. After the video stops, immediately So if the video is not going, I will ask the team to say it only. Hurt. But you have to say repeatedly. No? Hurt is the word. You keep saying. No? The video is saying repeatedly hurt. So the word that you want to know yes, is hurt. Very good. No, BNS. Okay, now we can see the video. It looks very interesting video for the first years. Okay, now you know the word, you have seen the video. All you need to tell under which section of BNS definition of that word comes. Answer now. Team 3. He says 114, absolutely correct. It is 114 BNS, very good. Okay, next question, let's see. Triad of occlusion, periphlebitis and neovascularization of retina is called as. We need your answer now. We can't hear any buzzer. Okay. Team D, yes. He says Eales disease, absolutely correct, +4. A red painful swelling seen as a complication of frontal sinusitis is called as now. Team B says spots puffy tumor, which is absolutely correct, +4. Melanie's 5-day self-healing lesion is other name for. Now. Yeah. Team B. He says thrombosed spines, perfect, absolutely correct, 4 marks. Okay. Drugs included as a part of Kit 7 in syndromic management of STI. Now. Doxycycline, azithromycin, absolutely correct, 4 marks. Okay, the final question of this exciting quiz at VMMC Nirvana by Team DAMS is now being shown on the screen. Are you ready for your final answers? Anybody who answers this also gets some chocolates that the team is hiding. Okay, the X-ray finding shown to you is classical of. Answer now. He says tetralogy of Fallot, minus marks. Next in line is Team B. Team D. Account side is not correct. Actually, they are showing X-ray, but I will give you a clue now. All the buzzers are over? Yes. Okay, I'm going to give you a clue now to see the answer is not in the neck, answer is not in the chest. They're trying to show you something above the chest, in the neck. Look at steeple sign is the answer, which is seen in laryngotracheobronchitis or croup. Croup is the answer. Well done. So sometimes they try to trick you by showing you a chest X-ray, and we are all thinking egg and all, but the answer is above it. So at the end of this round and this exciting round, these were the answers, and I think you got most of them, all of you, for which all the participants actually deserve a round of applause. And I also want you to again understand कि आप जीते या हारे उसका इतना मान्य नहीं है, जितना है कि आप आए, आपने participate किया. This is always more interesting. आप आए खेलने आते तो उसी में मजा आता है. It's not about winning or losing, so don't bother about कौन जीता है कौन नहीं जीता, लेकिन
मुझे ये बताया गया है कि कोई कैश प्राइज है जीतने वाली टीम के लिए, तो माना फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन पैसे तो मिलते हैं, लेकिन और उससे कुछ पार्टी भी है आज? नहीं हो रहे। कितने कितने दे रहे हैं हम जो विनिंग टीम है? विनिंग टीम इज गेटिंग 3000 कैश प्राइज. माय गॉड, टोटल 3000 कैश प्राइज दे विल बी टेकिंग होम इमीडिएटली. अभी की अभी. ओ माय गॉड, अभी तो काउंट कर लो भाई फटाफट. एंड द टीम हु कम्स रनर अप, उसके लिए क्या है? उसके लिए 2000 रुपये का इनाम है. बिल्कुल इमीडिएटली दे देंगे. जीएसटी भी लगाएंगे साथ में? नहीं लगा रहे, नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा इमीडिएटली प्राइस मिल रहा है. टीम विच कम्स थर्ड विल गेट 1000 रुपीज. सो तीनों टीम के लिए प्राइस है. और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स को खाली एनवेलप और कुछ चॉकलेट्स दे दी जाएंगी. So I'll request the team at the organizing to actually distribute the chocolates to the kids immediately. I think you can give chocolates to all the teams. So we have now the final scores being get ready for us, and I will start the team from the bottom team which has come 6th. This is 90? Yes, 9. This is 9. 9. Okay, team 6. Team 6, I would like you to stand up, and you are at the bottom of this, but you are winning because you came so far and participated. I will request you to stand up and come down so that everybody can give you a round of applause. Team 6, can you come down? Team from LHMC, they deserve a big round of applause that they came so far. Don't look at the scores, don't bother about winning or losing. It is more about participating. Now I will request the team which has come 5th, team 5th, team 5 to come down. They have scored 27 in this quiz. It was a tough quiz. They answered some very good questions. They deserve a round of applause. Well done, bache. You played well. Don't bother about anything. Huh? Okay. Now the next team will be team B. They have a score of 30. I would request them to come. They played very well, but they betted a lot. So after the betting round, the game changed. So team B, please come down and we'll give you a round of applause. Now I will request the team which has come third. Team which has come third, yes, is team D. Team D to come down. Give them a round of applause. They answered very well in the rapid fire. They woke up a little late, but they were playing very well. So they have scored 31. And I will request the organizing team to get their cash prizes ready and the certificates ready. And we welcome the team which is the runner-up in this quiz, this grand quiz in Nirvana, hosted by DAMS, is Team C with 52 marks. Give them a round of applause. And finally, the hidden gems, the silent players of this quiz, they won their game with mathematics. Yes. Otherwise, they would not have been winning, but they calculated their way out of it by using the Fick's law. First years don't get it wrong. It is Fick's law. And we have the winners. Give them a round of applause. They have a score of 72. Now, I'll request all the organizing team to join for a quick picture, and we give them the prize. We start from the team third. Yes, Is the prize ready? Yes, sir. Or we are going to the bank to take it out? Okay, well done, beta. Congratulations. Congratulations. Congratulations, bache. Done well. Congratulations. Bache, very good. वो नाम नहीं याद आया था, नहीं तो जी जाता. Well done, beta. Well done. Well done. Well done, beta. Well done. Well done. Well done. आ जाओ, आगे आ जाओ. It's your day. Come, आ जाओ आगे. So that we can identify the winners and all, everyone. So we'll take a quick photo with all the participants. I think half of you can come this side. आजा, थोड़ा सा आगे आजा. मैं इधर आ गया. Half मैं इधर आ गया. आजा, आजा. So are we now fitting in? I think. ये projector बंद कर देगा. नहीं, अलग-अलग सर्किट बनेंगे दोनों के.
And so you are all winners. We celebrate with a V sign. You are all winning, and this photo goes on the Instagram. Well done, everyone. Well done. So I'll request the teams to, if the prizes are ready, we can quickly hand over, because once they get the prize, they feel very happy. It should be immediate. So I'll request the winning team to be, team which has come third to be on the stage. The team D, please be on the stage. Yes, and your prizes and your certificates are ready. You have the prize and you can enjoy with the money. Yes, best of luck. Congratulations. And 2 bags from our side. Well done, beta. Well done. I will request the team to give the bags to all the participants actually also. And from our side in DAMS, we would extend that all the teams who have participated, who have reached the final round, can take a free back to basics course with the team DAMS. They can, just talk to the team. This is a course worth around 25,000, and they can take a 1-year subscription free because they've reached so far. So team which has come second, please, team C, be on the stage. Team C, yes, well done. So this is your prize and your certificates. Well done. God bless you. And your bags. Well done, beta. Well done. Wait. And the final team which has won with mathematics, they used their maths knowledge to calculate. Well done. And when he was explaining the answer, it was very good. Well done. So he deserves a big round of applause and a goodie bag and a cash prize. Well done. Congratulations. Congratulations. So this is how the fate changes. And I'll request all the quiz masters to join us on the stage. Sir, we have goodies for all the quiz masters. Very good. So let's have all the quiz masters who have worked tirelessly to do this, to make the quiz, to keep the timing, look at the scores. And we have some bags for you. Congratulations. Well done. Well done. Many of them already have the DAMS bag, but they can still have one more. Okay, for me. Okay, for me. Okay. Okay. So give them a round of applause. They made it possible today. Thank you. Thank you. Thank you. So I would like to call Pranav Singhal, the President of SWA, to award, give Sir the memento for this wonderful quiz. So, very good afternoon, everyone. Good afternoon. And मेरा जो अभी प्लान है कि I'll take maximum of 10 minutes. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बात करेंगे, but I'll keep it very crisp and very important. I'll talk about something which is very important for all of us, है ना? And the most important thing that we want all of us, we should know about is NEET PG 2024, which happened in August of this year. And this year, many of you were expected to, appear for the NEET PG exam in March. मार्च में पेपर होना था, but unfortunately it got postponed to August. So इस साल का NEET PG कब हुआ? अगस्त 2024 में. And it was around 1.5 years between the previous NEET PG और इस NEET PG में. Normally the papers happen in 12 months. इस बार postpone होते होते 1.5 साल हो गया. Now in this 1.5 years, many students had revised, सारी पढ़ाई कर ली थी, बार-बार revision कर लिया था. But when they came for the paper, it was slightly different from whatever they had seen in the past. तो मेरे को लगता है कि उस बारे में थोड़ा सा बात करने से it will give you insight, and once you know the exam,
वी कैन टॉक अबाउट हाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस. ठीक है, पहले फटाफट से ले लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन का नंबर 1 पार्ट. इस साल का जो एग्जाम था पहली बार इसको 2 सेट में किया गया. अभी तक जो भी हमारे पीजी एंट्रेंस के एग्जाम होते थे सिंगल सेट पेपर होता था. कितने क्वेश्चन होते थे एनीवन? 200 क्वेश्चन और सिंगल सेट. अब की बात 2 सेट में किया गया पेपर. ये पहली बार ऐसा है जिसमें मॉर्निंग वालों का अलग क्वेश्चन पेपर था, इवनिंग वालों का अलग क्वेश्चन पेपर था. ये पहला चेंज था. दूसरा, जब भी पेपर में हमें इस तरह के 2 सेट बनाने होते हैं, एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम का लेवल, डिफिकल्टी लेवल दोनों बच्चों के लिए बराबर रखे. कैसे रखें बताओ? डिफिकल्टी लेवल कैसे बराबर रखेंगे? वो कैसे बनाओगे? मतलब आप कैसे पेपर बनाओगे अगर आप एग्जामिनर होगे? मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ जो इस बार की नीट पीजी में मॉर्निंग सेशन में आया, टू गिव यू एन आइडिया कि पेपर कैसा था. मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको टोसिस है, मसल वीकनेस है, उसका सीटी स्कैन चेस्ट का दिखाया हुआ था. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी यहाँ इमेज नहीं है क्योंकि इस प्रोजेक्टर दूसरा, उस पर इमेज दूसरे पे है. मैं जस्ट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ. सीटी में यहाँ पे ऐसे वर्टिब्रा दिखाया हुआ था, वर्टिब्रा के साथ में बाजू में यहाँ पे एयोटा दिखाई हुई थी, असेंडिंग एयोटा, डिसेंडिंग एयोटा. फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी दिखाई हुई थी, पल्मोनरी आर्टरी, और इसके आगे यहाँ पे एक ट्यूमर दिखाया हुआ था. ठीक है, चॉइसेस क्या थी? चॉइसेस थी ए थाइमोमा, बी पैनकॉस ट्यूमर, सी स्मॉल सेल कैंसर, डी एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है, सब बच्चे देख पा रहे हैं? तो ये पहली बार पेपर था जहां क्लिनिकल स्टेम थी. हर क्वेश्चन लगभग ऐसा था, क्लिनिकल क्वेश्चन, इमेज, 4 चॉइस. ओके, टोसिस, मसल वीकनेस वर द की क्लिनिकल फीचर. सीटी स्कैन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लंग्स दिख रही थी, यहाँ पे लंग्स दिख रही थी, बीच में ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी, और वी कुड सी अ ट्यूमर. दिस वाज द ट्यूमर. ओके, नाउ एनीवन वांट्स टू गिव मी एन आंसर? ओके, मैं देखता हूँ. अब की वर्ड है टोसिस और मसल वीकनेस. कैन यू हैव टोसिस इन पैनकॉस ट्यूमर? ये प्रीवियस INICET क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है. क्या टोसिस हो सकता है पैनकॉस ट्यूमर में? क्यों? हॉर्नर सिंड्रोम के कारण. पैनकॉस ट्यूमर लंग के एपेक्स से अराइज करने वाला ट्यूमर है which causes invasion of the brachial plexus, invasion of the sympathetic chain, leading to Horner syndrome, leading to ptosis. Make sense? क्या स्मॉल सेल लंग कैंसर में ऐसा हो सकता है? अगर अभी आपने क्विज पार्टिसिपेट की होगी तो आप देख पाओगे, क्या आपको स्मॉल सेल लंग कैंसर में माइस्थीनिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं? इफ यू हैव एसोसिएशन विद, बोलो, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम. क्या थाइमोमा में मसल वीकनेस हो सकती है? थाइमोमा is known to be associated with myasthenia gravis. What is adenocarcinoma? Adenocarcinoma is a peripheral lung cancer. इसमें ऐसा हम कोई भी लिंक नहीं बना पा रहे कि टोसिस क्यों होगा, मसल वीकनेस क्यों होगी. So this is the question that was asked this year in the NEET PG exam. मैं आपको मॉर्निंग वाला सेशन दिखाऊंगा, फिर इवनिंग भी दिखाऊंगा, and then we'll talk about the difference between the two paper. ये मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन था. Now when we look at the question, this is a image based question. इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? हाँ जी बेटा, कैसे करना चाहिए अप्रोच? क्वेश्चन देखें, इमेज देखें, या चॉइसेस देखें, क्या करें? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा पहले इमेज को देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर चॉइसेस देखते हैं, जो कि क्वेश्चन के लिए गलत अप्रोच है. इमेज बेस्ड क्वेश्चन का करेक्ट अप्रोच है वी स्टार्ट विद द चॉइसेस. मैं समझाता हूँ क्यों. एक बार ये कोशिश करना, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. इट विल गिव अस एन आइडिया. देखो मेरे साथ, देखो ये क्वेश्चन है, ये इमेज है. So when you look at the image without looking at the choices, अब आप सोच रहे हो कि क्या ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अयोटिक डायसेक्शन है, लंग कैंसर है, कि निमोनिया है. वी आर थिंकिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स. लेकिन MCQ एग्जाम की जो सबसे खूबसूरत बात है कि आंसर आपके सामने लिखा ही हुआ है, आंसर उन 4 में से ही है जो दिए हुए हैं. सो इज इट नेसेसरी टू लुक एट द इमेज? नॉट नेसेसरी. शुरू में क्यों देख रहे हो? पहले वी नीड टू नो व्हाट टू थिंक ऑन. What do we think on? And we look at the first, we'll start from the choices. Choices में देखा, एक चॉइस लिखी थी थाइमोमा. थाइमोमा कहाँ पे होगा? थाइमोमा एंटीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर है, क्योंकि थाइमिक सेल से आएगा, थाइमस एंटीरियर मीडियास्टिनम में होता है. पैनकॉस ट्यूमर लंग के एपेक्स में होगा. स्मॉल सेल कैंसर
लंग कैंसर है, कहाँ पे होगा? सेंटर में. स्क्वामस और स्मॉल सेल सेंट्रल कैंसर्स होते हैं, और एडिनो कैंसर पेरिफेरल कैंसर होता है, ये पेरिफेरी में दिखेगा. सो दिस इज द नॉलेज दैट आई हैव इन माय बैकग्राउंड. मैं चॉइसेस देख रहा हूँ. जैसे ही मैं ये चॉइस देखता हूँ मैं इमीडिएटली देख पा रहा हूँ, और जो मैं चाहता हूँ आप भी देखो, कि ये 3 चॉइस तो लंग के कैंसर हैं, और एक इनमें से चॉइस है जो मीडियास्टाइनल है, जो कि मीडियास्टिनम, जो थोरैक्स के सेंट्रल भाग को मीडियास्टिनम कहते हैं. सो आउट ऑफ देम 3 चॉइसेस आर लंग कैंसर्स, 1 इज मीडियास्टिनम. नाउ व्हेन आई लुक एट द इमेज आई एम ओनली लुकिंग टू सी क्या वो लंग में दिखा रहे हैं बीमारी या वो मीडियास्टिनम में दिखा रहे हैं. मैं ज्यादा सोच ही नहीं रहा, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो एवरीथिंग, आई वांट टू गेट द आंसर राइट. अब मैं गया चॉइस पे, अब मैं जब क्वेश्चन पे जा रहा हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं बताओ? लंग्स आर एक्चुअली क्लियर. ये जो ब्लैक सर्कल बनाए लंग्स थे, ये अयोटा बनाई मैंने, वर्टेब्रा, पल्मोनरी आर्टरी, वो ट्यूमर है. So where is the tumor located? It is in the mediastinum. Immediately I am able to think शायद इसका आंसर थाइमोमा होगा. I go to the clinical question, वहां पे मिला myasthenia gravis के symptoms. क्या था? Muscle weakness, ptosis, which is telling me, am I able to connect them? Correct answer becomes thymoma. Correct answer is thymoma. Okay? Are you able to understand this? समझ आया कैसे अप्रोच करना है? So इस साल के पेपर की जो फर्स्ट बात थी, जो मैं चाहता हूं आपको, मैं एक ही जगह लिख देता हूं. There were lot of इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इन दी पेपर. इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे. दूसरा, वी कुड नॉट प्लेस कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है. ये आपकी एनाटॉमी नॉलेज से भी सॉल्व हो सकता है, पैथोलॉजी की किताब से भी सॉल्व हो सकता है, मेडिसिन सर्जरी से भी हो सकता है, रेडियोलॉजी की नॉलेज से भी हो सकता है. इस तरह के क्वेश्चंस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन. और दूसरी बात थी, 2 सेट में पेपर था. यहां तक अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरा फर्स्ट जो मैंने लर्निंग है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. In any image-based question, don't look at the image. Start from the options. Then go to the image only to eliminate. Only to eliminate. Most people don't know this. It is strange कि ये इतना छोटी सी बात है. Most people don't know this. वो सीधा image देख के सोचे जा रहे हैं. Now imagine, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, सबसे मुश्किल जब हम क्विज में पैथोलॉजी के इमेज देखते हैं, या हम एग्जाम में पैथोलॉजी का इमेज देखते हैं, या हिस्टो का इमेज देखते हैं, वो क्या होता है? यही नहीं समझ आता कौन सा बॉडी पार्ट है, कहाँ का है, किडनी है कि लंग है कि लिवर है, पता ही नहीं चल रहा. बट वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस. वी जस्ट नीड टू रिस्ट्रिक्ट अवर थिंकिंग प्रोसेस टू चॉइसेस. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ एमसीक्यू एग्जाम एज वेल एज वीकनेस. एमसीक्यू एग्जाम की सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है? दिस इज द ओनली पेपर वेयर द आंसर्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल यू नीड टू डू इज एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस. एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन. अपन आंसर ढूंढेंगे नहीं, हम जो नहीं है वो रिलॉट करेंगे. दूसरा देखो, इससे बेहतर क्या एग्जाम हो सकता था? फिल इन द, क्या कर सकते थे इसकी जगह? फिल इन द ब्लैंक्स. सपोज आई चेंज द क्वेश्चन पेपर टू फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न. अब ये नहीं हो पाएगा. अब आई हैव टू थिंक इनफाइनाइट एंड सॉल्व इट. लेकिन इंडिया में आज तक किसी ने फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अभी तक सोचा नहीं है. अभी तक नीट पीजी इज ऑलवेज इमेज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल यू नीड टू डू इज एलिमिनेट. लेकिन ये असली चीज नहीं है जो मैं दिखाना चाहता हूं. असली चीज है इवनिंग का पेपर. नाउ वेन एवर यू आर मेकिंग अ पेपर, अब इवनिंग का पेपर जो था इसी साल में इसी सेट के साथ दिखाना चाहता हूं. द एग्जामिनर वांट्स टू कीप द पेपर लेवल इक्वल. एग्जामिनर वांट्स टू कीप द पेपर लेवल इक्वल. तो उन्होंने इवनिंग में क्या क्वेश्चन डाला? उन्होंने सेम दोबारा से सीटी स्कैन दिखाया. ये वर्टेब्रा है, देखो मेरे साथ, चेस्ट में थोरेसिक वर्टेब्रा है. वर्टेब्रा के साथ में ये अयोटा दिख रही है, डिसेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा. ठीक है, असेंडिंग अयोटा आगे होती है, डिसेंडिंग अयोटा पीछे होती है. और यहाँ पे ऐसे पल्मोनरी आर्टरी दिखाई हुई थी. और सेम लोकेशन पे जहाँ पहले ट्यूमर दिखाया था ना अभी थाइमोमा, वहाँ पे एक और ट्यूमर दिखा दिया इवनिंग में. ठीक है, मेरे साथ देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड प्रॉब्ली शायद कोई और ये बात आपको नहीं बता पाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. ध्यान से देखना. ठीक है, इसके सेंटर में ना ऐसे डार्क डार्क सा कलर बनाया हुआ था. डार्क सा कलर, थोड़ा मैंने थोड़ा लाइट कर दिया. डार्क सा कलर बनाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था -62 हाउंसफील्ड यूनिट एग्जाम के अंदर. और सेंटर में ना कुछ वाइट सा ऐसे जैसे टूथ होता है ना, ऐसा कैल्शियम बना रखा था सर. वाइट कैल्शियम बना रखा था. ठीक है, और पूछा था व्हाट इज द डायग्नोसिस इन द इमेज शोन टू यू? ए टेरेटोमा, बी थाइमोमा, सी लिम्फोमा, डी थायराइड.
सो अब समझने की कोशिश करना है कि क्यों इस बार के एग्जाम के बाद यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट कि पेपर डिफिकल्टी लेवल 1 नहीं था, पेपर 2 मुश्किल था। कारण क्या है मैं दिखाता हूँ। एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है, ही वांट्स टू कीप द क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक इन दी पेपर। अब टॉपिक था एंटीरियर मीडियास्टिनल मास, पहले वाला एंटीरियर मीडियास्टिनल मास था थाइमोमा। वो अंडर ग्रेजुएट बच्चे के लिए मुश्किल है थाइमोमा सीटी पे पहचानना, उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो साथ में माइस्थीनिया की एसोसिएशन आने के कारण ईजी हो गया। दूसरे क्वेश्चन में फिर से उन्होंने एंटीरियर मीडियास्टिनल मास डाल दिया। एंटीरियर मीडियास्टिनल मास में अब ऊपर लिख दिया -62 हॉन्सफील्ड यूनिट। व्हेन वी गो टू द सीटी स्कैन, हमें सीटी स्कैन में हमें बताएंगे कि -50 टू -100 हॉन्सफील्ड यूनिट अगर आप देखते हो तो इट इज सीन इन फैट। दूसरा, ये जो व्हाइट व्हाइट सा सब दिख रहा था उसके इस लीजन के अंदर, दैट इज कैल्शियम। अब हमें सोचना है ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो कि एंटीरियर मीडियास्टिनम में पाई जा सकती है, जिसमें फैट भी होगा, कैल्शियम भी हो सकता है, हेयर भी हो सकते हैं। सो वी नो ये सब दिखा तो वो मैच्योर जर्म सेल ट्यूमर हो गया जिसका नाम है टेरेटोमा। क्या टेरेटोमा एंटीरियर मीडियास्टिनम में हो सकता है? टेरेटोमा तो डर्माइट तो हमने ओवरी में पढ़ा होगा ना, बट कैन यू हैव अ टेरेटोमा इन द एंटीरियर मीडियास्टिनम? यस, it is one of the differential diagnosis of anterior mediastinal masses. The answer was teratoma. Answer was teratoma. क्या आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया उन्होंने? उन्होंने एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के एक क्वेश्चन को मॉर्निंग सेट में डाल दिया, एक को इवनिंग में डाल दिया, और एग्जामिनर के हिसाब से ये इक्वल डिफिकल्टी लेवल है। बट एक्चुअली इफ यू लुक एट इट इज नॉट रियली, मतलब एकदम से सही नहीं है। मीडियास्टिनम में टेरेटोमा होता है या नहीं होता, कई बार अंडर ग्रेजुएट को पता भी नहीं होता, लेकिन थाइमोमा माइस्थीनिया से एसोसिएटेड होता है, सबको पता होता है। सो इस कारण से ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी लेवल अनइक्वल हो गया। ये इवनिंग का क्वेश्चन था सेम टॉपिक के ऊपर। अब इसको इक्वल करने के लिए उन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। यानी एब्सोल्यूट स्कोर्स को नहीं लिया यहां एग्जाम के अंदर, एब्सोल्यूट स्कोर की जगह दोनों सेट की परसेंटाइल निकाली गई कि कौन बच्चा किस परसेंटाइल में आ रहा है, उसके हिसाब से उसको नॉर्मलाइज कर दिया। मतलब अगर पेपर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा, तो नॉर्मलाइज स्कोर इक्वल हो जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद उस डिफिकल्टी लेवल को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो जो एंड रिजल्ट आया कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न आया, इसमें जो सबसे कीवर्ड आ गया अभी तक, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिमिलर टॉपिक दोनों सेट में डाले गए, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा वेरी कर रहा था, परसीव्ड डिफिकल्टी लेवल, विच वॉज एड्रेस्ड बाय नॉर्मलाइजेशन, जिसको नॉर्मलाइजेशन एड्रेस किया। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा उन्होंने क्या किया, एक वर्ड होता है जो आपने सुना भी होगा अब तक, जिसका नाम है PYQ। सुना है बेटा? PYQ सुना है? क्या होता है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक अगर हम एग्जाम के पैटर्न देखते हैं, मुझे 25 साल हो गए मुझे इसमें पढ़ाते हुए, इंडिया की पहली कोचिंग मैंने शुरू की थी इस सेक्टर के अंदर। तो जब मैं 25 साल पहले मैं देख रहा हूँ, अगर मैं पास्ट में जाता हूँ 2007 से 2012 तक हमारे पीजी एंट्रेंस एग्जाम का एक ही पैटर्न था, उसका नाम था ऑल इंडिया पीजी। 2013 में पहली बार नीट का एग्जाम अनाउंस किया गया। 2013 से 2017 तक सिंगल पैटर्न था नीट पीजी का, जिसमें बहुत सारे वन लाइनर बहुत ज़्यादा आते थे, वन लाइनर बहुत आते थे उस पैटर्न के अंदर। 2018 से 2023 तक सिंगल पैटर्न था जिसमें सिमिलर क्वेश्चन थे। फर्क सिर्फ इतना था, 18-19 में 300 क्वेश्चन आते थे, 20 के बाद उसको कोविड के बाद उन्होंने कम कर दिए और 200 क्वेश्चन कर दिए। बाय नो लॉजिक एट ऑल, किसी को पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, लेकिन क्वेश्चन कम कर दिए। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा था। तो आप अगर किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे जो 2023 में 2022 में होगा, सब बोलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उतनी कंसंट्रेशन नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पेपर के बाद आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे, लोगों की बात सुनोगे, सब बोलेंगे इट वॉज मोर अबाउट concepts, it was more about integration, less about rote learning. rote learning मतलब होता है कि मैंने याद कर लिया। अब याद कर लिया तो टेरेटोमा जब सुना ही नहीं कभी, तो याद क्या करते? तो आप याद ही नहीं कर सकते थे। अब याद नहीं, आपको पेपर वाले दिन सोचना है, फैट और कैल्शियम अगर एक साथ आ रहे हैं तो तीनों जर्म लेयर के डेरिवेटिव आ रहे हैं, फैट, कैल्शियम, हेयर, ये सब लिखा है, तो आंसर है टेरेटोमा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस तरह के पेपर आने के कारण ज्यादातर लोगों ने पेपर के बाद आके बोला, इस पेपर में बोलो सोचना पड़ रहा था, इस पेपर में सोचना पड़ रहा था। और दूसरा लोगों ने क्या बोला आके, कि इतना मुश्किल नहीं था अगर आप सोच पाओ। दूसरी जो हैरानी की बात थी, व्हेन द स्कोर केम
सब लोग पेपर के बाद आके कह रहे थे मुश्किल था, ये तो मुश्किल है, नहीं कर पा रहे थे ये वो। जब स्कोर आया तो इतना स्कोर हिस्ट्री में कभी नहीं आया था जितना इस बार आया है। जो पहले बच्चे 120 अगर करेक्ट करते थे, 130 करेक्ट करते थे, कुछ मिल जाता था, अभी 150 के ऊपर जाना पड़ रहा था। इट वॉज अ हाई स्कोरिंग गेम। पेपर में स्कोर सबने अच्छा लाया, यानी इफ यू वर एबल टू थिंक इट वॉज ईजी। दूसरी चीज देखते हैं यहाँ पे, अब अगर हम ये देखें तो ये 5 साल का इंटरवल चल रहा है। हर 5 साल के अंदर इंडिया का अंदर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। ये क्यों करते हैं? टू अवॉइड रोट लर्निंग। क्योंकि अगर एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे तो कोई बच्चा याद कर लेगा। जैसे अगर मैं 2021 से 2023 तक के INICET के पेपर देखता हूं, हर INICET में इन 3 साल के अंदर ये 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 2021, 22, 23। अक्लेजिया कार्डिया, जायंट सेल ट्यूमर, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी ऑफ द ब्रेन। अगर आप उठा के देखोगे तो 2023 के अंदर जितने भी बच्चे यूट्यूब पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, सब इंटरव्यू दे रहे थे, सब ने बोला अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में तो हर बार अक्लेजिया आना है, याद कर ले, बर्ड वीक कर ले। मतलब इस तरह से हर 2-3 साल में ऐसा फेज आता है जहां पे पीपल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि यार ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम क्वेश्चन आएंगे। 2024 के INICET में कोई रिपीट नहीं किया उन्होंने। So we know that the examiners are also listening to your YouTube videos when you start going on YouTube and you start claiming कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों किताबें छोड़ दो। ऐसा होता नहीं है, असली में ऐसा होता नहीं है। हर 5 साल में पैटर्न को पूरी तरह बदल देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का पैटर्न कैसा होगा? सोचो 23 जैसा कि 24 जैसा? इसको कहते हैं प्रिडिक्ट। वी नीड टू पैरेलल प्रिडिक्ट ऑल्सो, है ना। दूसरा देखो मेरे साथ, 26 का कैसा पैटर्न होगा? लगभग ऐसा। कब तक ऐसा चलेगा? 5 साल, या फिर जब तक एक ऐसा एग्जाम नहीं आता जिसके बारे में आपने सबने सुना है, जो हमारे मेडिकल एजुकेशन का लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपने देखा था हैरी पॉटर में, जिसके बारे में सबने सुना था, देखा किसी नहीं था, जिसकी बात सुनते डर लग जाता था, लेकिन उसका नाम क्या है? नेक्स्ट इंडिया में आने वाला लाइसेंसिंग एग्जाम है। सो आई होप आई हैव गिवन यू आइडिया कि अभी अगली बार का नीट पीजी विल बी सिमिलर टू दिस, मोर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, मोर न्यू क्वेश्चंस, मोर थिंकिंग प्रोसेस विद योर स्कोरिंग बीइंग ऑन द नॉर्मलाइजेशन पैटर्न। अच्छा, एक चीज और मुझे आप बता दो इसके अंदर, अगर आप इसे बता पाते हैं तो, कि इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम है जो आप अपीयर कर सकते हैं? एक तो नीट पीजी हो गया, और पता है किसी को? दूसरा पेपर है INICET, एक का नाम है नीट पीजी। और भी कोई पेपर होते हैं जो हम एज अ मेडिकल डॉक्टर हम एस्पायर करते हैं? हम इधर USMLE लिख देते हैं, वेरी गुड। अमेरिका जाना है तो USMLE होगा। इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम अभी होता है? नहीं। इंडिया में एज ऑफ नाउ इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज विच इज accredited by the National Medical Council or the erstwhile MCI, you are licensed to do medicine. आपने को कोई एग्जाम नहीं देना जब तक नेक्स्ट नहीं आता। नेक्स्ट आएगा तो खाली पीजी एंट्रेंस का एग्जाम नहीं होगा, वो आपके डॉक्टर बनने का लाइसेंस भी होगा। मैं थोड़ा सा सारी चीज़ें आपके सामने फटाफट से रख देता हूँ, एंड विल जस्ट लुक एट ओनली 2 minutes कंपैरिजन बिटवीन देम। ओके, आपने बताना इनिसेट किसके लिए होता है? कोई बच्चा बता सकता है? एम्स के लिए। कौन सा एम्स? दिल्ली या सारे? सारे एम्स। तो सीटें बहुत होती हैं क्योंकि पेरिफेरल एम्स भी इंक्लूड हो गया। और कौन सा कॉलेज? PGI और जिपमर और निमहांस। ठीक है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डायरेक्ट 6 ईयर MCH आज अवेलेबल है इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर? न्यूरो सर्जरी, DM न्यूरोलॉजी भी निमहांस में अवेलेबल है, और एम्स जोधपुर के अंदर अभी प्लास्टिक सर्जरी 6 ईयर डायरेक्ट इंक्लूडेड है। प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, जो हमें नहीं पता होता जब हम अंडर ग्रेजुएट एज में होते हैं। लेकिन जितने भी ये फिल्म स्टार जब आजकल पहले पिक्चर में आते हैं, दूसरी पिक्चर में शक्ल बदल जाती है, तीसरी में एकदम स्मार्ट हो जाती है हीरोइन। इट इज़ ऑल प्लास्टिक सर्जन्स आर्ट। तो प्लास्टिक सर्जरी में बहुत पैसा है अभी, और वो अब डायरेक्ट एम्स जोधपुर में यू कैन डू इट आफ्टर MBBS डायरेक्टली। पहले नहीं होता था, पहले MS करो फिर MCH करो। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में उनको नहीं पता होगा, लेकिन अभी MBBS के बाद भी डिग्री होती है। जस्ट मैं समरी करना चाहता हूँ। तो इस इनिसेट पेपर का पैटर्न ये है, देख लो करंट पैटर्न ये देख लो। इस पेपर में 50-50 क्वेश्चन के 4 ब्लॉक आते हैं। 50-50 क्वेश्चन के 4 ब्लॉक, ईच ब्लॉक इज बोल दो 50 मिनट ईच। हर ब्लॉक 50 मिनट का है, और हर क्वेश्चन 50-50, हर ब्लॉक में 50-50 क्वेश्चन आएंगे। इस बार का पेपर कैसा था मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मई 2024 इनिसेट पेपर। इस बार के पेपर में पहले ब्लॉक में 50 क्वेश्चन आए फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जानते हैं आप लोग? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ब्रिलियंट। सेकंड ईयर सेकंड ब्लॉक में आ गए पैथ, फार्मा, माइक्रो। तीसरे ब्लॉक में उन्होंने डाल दिए मेडिकल स्पेशलिटीज। ये मैं बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं हुआ, ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ। चौथे ब्लॉक में सर्जिकल स्पेशलिटीज। सर्जिकल स्पेशलिटीज में आ गया सर्जरी, ऑब्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब आ गया। मेडिसिन में मेडिसिन, पीड्स, साइकी, डर्मा, ऐसे।
इस ब्लॉक के कारण एक गलती हो गई उनसे। ये गलती कोई भी मानेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर रूल है कि एग्जामिनर कभी गलत नहीं होता, गलत बच्चे ही होते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे अभी नीट दे के आए होंगे, अगर आने वाले भी होंगे आपके यहाँ, उसके यहाँ पे भी आपने देखा कोई फुल मार्क्स ला रहा है, कोई हाफ ला रहा है, क्या कर सकते हैं? एग्जाम ठीक से ले लो भाई, पूरे मार्क्स क्यों आ रहे हैं किसी के? आने नहीं चाहिए। डू एग्री? फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते, कैसे ला पाता कोई पूरा? आपके सामने आज क्विज के अंदर 6 टीमें बैठी थी, इतने होशियार बच्चे थे, सब जीत के आए थे, कोई फुल मार्क्स नहीं ला रहा। मेक अ गुड पेपर, नहीं लाएगा, है ना? तो इस बार की गलती को बता दें मुझे, क्या गलती थी इस बार के INICET पेपर में बेस्ड ऑन द मैथ्स? क्योंकि उन्होंने 4 ब्लॉक इंट्रोड्यूस किए, उन्हें खुद ही ध्यान नहीं रहा कि बीच में PSM भी होता है। ये पहला साल था जिसमें PSM के नेग्लिजिबल क्वेश्चन आए पेपर में। PSM सबसे बड़े सब्जेक्ट्स में से आता है MBBS के, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ना शुरू करते हैं इसे। इस बार PSM में क्वेश्चन नहीं आए। PSM के पेपर के, इस पेपर के बाद बहुत सारे PSM के फैकल्टी मेरे पास आए, फोन करने लगे, सर लगता है हमारा करियर खत्म हो गया क्या? अभी कुछ आना ही नहीं है। PSM वॉज इग्नोर्ड। एंड लुक एट द सेकंड स्ट्रेंजेस्ट थिंग ऑफ द INICET पेपर, ठीक है? First and second year combined, which are only 6 subjects, contributed to half of the paper. And you will hear all the rankers saying, INICET में जाना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाना है, तो फर्स्ट सेकंड ईयर को इग्नोर नहीं कर सकते। और वो सभी क्वेश्चन इंटीग्रेटेड थे। मैं उसका भी एग्जांपल आपके सामने रख दूंगा कि क्या क्वेश्चन था वहां पे। और फिर यहाँ पे टोटल क्लिनिकल 100 थे, PSM ना के बराबर। लेकिन अब आपने ध्यान से देखना एग्जामिनर्स को। एम्स, PGI, जिपमर के अलावा और कौन एग्जामिनर है? बोलो। निमहैंस। निमहैंस एक न्यूरो साइंसेस का इंस्टीट्यूट है जिसका प्राइमरीली गोल है साइकेट्री वहां पे बहुत अच्छी है, बहुत सारी साइकेट्री की सीट है निमहैंस में। तो अगर निमहैंस एग्जामिनर होगा, मैं जानना चाहता हूं सेकंड ईयर के बच्चों से, निमहैंस एग्जामिनर होगा तो गायनी के क्वेश्चन पूछेगा कि साइकेट्री के पूछेगा? साइकेट्री के। तो सभी शॉर्ट सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कम आए, लेकिन साइकेट्री पे क्वेश्चन बहुत आए। साइकेट्री के क्वेश्चन PSM से ज्यादा थे, which is a mistake by the examiner, but it happened this year in the INICET paper. Psychiatry had more questions than community medicine, जो कि एग्जाम की या MBBS के करिकुलम के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से गलत है, ठीक है? Now all this was improved upon by the NEET PG. NEET PG के अंदर उन्होंने क्या किया, इस ब्लॉक को 40 का कर दिया। अब वो ले गए 40 क्वेश्चन, 42 मिनट, 5 ब्लॉक्स। NEET PG में कितने ब्लॉक आए बेटा? 5 ब्लॉक। 5 ब्लॉक आने के कारण उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर को 1 ब्लॉक दे दिया, सेकंड ईयर को 1 ब्लॉक दे दिया, यानी फर्स्ट सेकंड ईयर के मिला के आगे 80 क्वेश्चन। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को 1 ब्लॉक दे दिया, PSM ऑफ था ENT 1 ब्लॉक दे दिया, मेडिकल स्पेशलिटी 1 ब्लॉक, सर्जिकल स्पेशलिटी 1 ब्लॉक। सो 21 एग्जाम के अंदर थर्ड और फोर्थ ईयर पे ज्यादा क्वेश्चन आए NEET PG। ये बहुत कम लोग जानते हैं और बच्चे सब गलतियां कर रहे हैं। आपका INICET पेपर से पहले आपको फर्स्ट सेकंड ईयर जरूर रिवाइज करना है, साइकेट्री के मेन नोट्स रिवाइज करने हैं, समझ पा रहे हैं? NEET PG से पहले आपको थर्ड और फोर्थ ईयर रिवाइज करना है, वहां पे ज्यादा पैसा है, ज्यादा क्वेश्चन है। यू अंडरस्टैंड? वी हैव टू पुट आवर एफर्ट वेयर द मनी इज द क्वेश्चंस। यहाँ 120 क्वेश्चन है, वहां पे 100 फर्स्ट ईयर, 100 थर्ड ईयर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गया? ये इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। अब जब नेक्स्ट आएगा तो कैसे चेंज हो जाएगा? नेक्स्ट आएगा पता नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में डिफाइन कर दूंगा। ये लाइन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप अपना करियर बना रहे हैं इस समय पे। इस लाइन को कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, कभी देखा? इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। ये बात अपने कमरे में कहीं पे लिख दो ताकि आगे की जिंदगी आसान हो जाए। इस साल में जब हमारा NEET PG का एग्जाम था, जो बच्चे नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, जब NEET PG का एग्जाम था रात को 10 बजे थे। मैंने सोचा इस साल बहुत मेहनत कर ली, हम 25 साल से पूरे इंडिया में कोचिंग चला रहे हैं और हमारा नाम आपने सुना भी होगा DAMS, और हमारा ऐप है E-MEDICOZ। तो मेरे को लगा इस साल का पूरा काम खत्म हो गया, अब तो कल NEET का एग्जाम है, आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। 10 बजे मैं सोने लगा, फोन बजने पे लग गया एक के बाद एक। कभी बच्चों के टैग आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा ये सो क्यों नहीं रहे, कल तो पेपर है, क्या हो गया? एंड सडनली एवरीबडी सेइंग सर इज इट, देखो हमारे पास व्हाट्सएप आजकल ऐसे आ रहे हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, ठीक है? इज इट ट्रू? और पेपर वॉज कैंसिल्ड एट द लास्ट मोमेंट, पेपर वॉज कैंसिल। और रात को बोला 10 बजे पेपर हो ही नहीं रहा NEET PG। कई बच्चों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इज इट ट्रू कैसे करते, वो एग्जाम सेंटर में पहुंचे, वहां दरवाजा नहीं खुला। सो इंडिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया में एग्जाम 10 बजे कैंसिल भी हो सकता है। मार्च के पेपर को अचानक से पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, फिर प्रीपोन कर दिया, फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर जिस दिन होना था उस दिन कैंसिल कर दिया, फिर अगस्त में हुआ। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है क्या? इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स।
तो अभी नेक्स्ट के बारे में मैं चाहता हूँ, 2023 में एक सेमिनार हुआ सभी कॉलेजेस के अंदर, एनएमसी के चेयरमैन ने एक सेमिनार किया, जिसको वो चाहते तो यूट्यूब पे डायरेक्टली लाइव ले जाते, अपना फ़ोन ऑन करते, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बट दे पुट इट ऑन दी, पूरा हर कॉलेज के जैसे आपके यहाँ सेमिनार हॉल पे भी कनेक्ट किया, सभी बच्चों को बिठाया और बताया इस बार नेक्स्ट हो रहा है तुम लोगों का, तैयारी कर लो, और पूरा सिलेबस बता दिया। बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। थोड़े दिन बाद हेल्थ मिनिस्टर का इंटरव्यू आ रहा था, उसने कहा था मुझे तो किसी ने बताया नहीं। एंड देन ही सेड ओके, अभी क्योंकि ये कुछ कह रहे हैं मैं कुछ कह रहा हूँ, लेट्स गिव इट टू अ कमिटी टू डिसाइड व्हेन आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट, एंड द अल्टीमेटली नेक्स्ट वाज अगेन फॉरगॉटन। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब इंडिया में कभी कुछ भी हो रहा है, कभी पेपर हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी पैटर्न चेंज हो रहा है। इस बार नया पैटर्न आ गया, इस बार 2 सेट आ गए एक की जगह। तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, नेक्स्ट आने के बाद सबसे की 3 चेंजेस आ जाएंगे, 3 बातें याद करनी। पहला, ये पेपर मैंडेटरी हो जाएगा। आज नीट पीजी आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब आपने पढ़ना है आगे तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप अमेरिका जा रहे हो, छोड़ दो, आईएएस करना छोड़ दो। लेकिन वंस द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, एनीबडी हु इज ग्रेजुएटिंग विल हैव टू pass this exam, even if you're not wanting to pursue medical career further, for your graduation, for your license, you will have to pass this exam. दूसरा, 3rd 4th year के पेपर predominant हो जाएगा। 80% of the paper will be from your 3rd and 4th year. 3rd 4th year subjects के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ऑफ्था, ENT, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, अलाइड, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। 1st 2nd year के कम आएंगे। और कोई चेंज, तीसरा चेंज बता सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने बोला कि हम इंटर्नशिप के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेंगे। फिर उसके बाद वो खुद ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि करेंगे कैसे हमें पता नहीं। पूरे इंडिया का प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेंगे उन्होंने कहा, लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उसके बारे में बताया नहीं। तो जैसे ही नेक्स्ट आएगा, आवर फोकस विल बिकम मोर क्लिनिकल। नीट पीजी में ज्यादा 3rd and 4th ईयर, उससे भी ज्यादा नेक्स्ट में आएंगे। यहां तक समझ आ गया? इनिसेट इज द ओनली एक्सेप्शन जहां 1st 2nd ईयर ज्यादा आता है। अब यूएसएमएलई ले लो, एक ही पेज में। यूएसएमएलई का पेपर कैसे होता है, किसी को पता है? स्टेप 1, स्टेप 2, सीके, क्लिनिकल नॉलेज, बेसिक साइंसेस। अब मैं ना आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता देना इनमें से कौन सा एग्जाम में स्कोर आता है, कौन सा पास फेल होता है? स्टेप 1 इज ओनली पास फेल, स्टेप 1 इज ओनली पास एंड फेल। इसमें कोई स्कोर नहीं देते। क्यों नहीं देते? पहले तो देते थे। अब उनका ये मानना है कि जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट आते हैं अमेरिका में, हर एग्जाम में हर पास आउट कैंडिडेट को यूएसएमएलई पास करना है, चाहे वो अमेरिकन ग्रेजुएट है, चाहे वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट है। इंटरनेशनल ग्रेजुएट इज अ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, चाइना, हर जगह से लोग जो जा रहे हैं आईएमजी। तो उन्होंने देखा कि आईएमजी के जो बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं, स्टेप 1 में बहुत हाई स्कोर ला रहे हैं। तो उनको लगा यार हमारे बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है, ये लोग रट के आ रहे हैं। उन्होंने कहा स्टेप 1 विल नाउ ओनली बी पास एंड फेल। सो यानी स्टेप 1 का हाई स्कोर इज नो लॉन्गर अ एज, इट इज नो लॉन्गर फैक्टर जहां से हम एलिमिनेट कर सके किस कैंडिडेट को लेना है नहीं लेना। इसमें सिर्फ पास फेल होना है बस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, स्टेप 1 में यू नीड टू पास एट फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपका अटेम्प्ट लग जाता है तो आपके रिज्यूमे में आ जाता है कि यू पास्ड इन 2 अटेम्प्ट्स। बेसिक साइंसेस आएंगे। कैसे आएंगे बेसिक साइंसेस? मैं आपके सामने स्टेप 1 स्टेप 2 सीके के क्वेश्चन का एग्जाम्पल रखूंगा सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है? ध्यान से देखना, दोनों सेम टॉपिक होगा, यू विल हैव टू गेट टू द आंसर, ठीक है? ध्यान से देखना मेरा। एक पेशेंट है जिसको एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन हुआ, जिसका जब हमने सीटी स्कैन देखा तो ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई, यहाँ पे दिखाया उन्होंने अयोटा, यहाँ पे दिखाया अयोटा, और उन्होंने दिखाया अयोटा में यहाँ पे 2 ल्यूमन्स। क्या कहते हैं इस बीमारी को? अयोटिक डायसेक्शन। यू नीड टू आइडेंटिफाई अयोटिक डायसेक्शन ऑन द इमेज। स्टेप 1 जो बेसिक साइंसेस होता है वहां पे भी क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, हमारे जैसे नहीं आते इंडिया के जैसे राइट द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऐसा नहीं आता। वो उसको ऐसे ले जाते हैं, देखो ध्यान से, स्टेप 1 में ले जाएंगे, ध्यान से देखना। A patient comes to emergency with excruciating chest pain. You are the resident doctor evaluating the CT scan. CT scan is shown to you. What is the most likely underlying connective tissue condition which predisposes you to develop the condition shown here? Answer is Marfan's. Aortic dissection किस प्रकार की बीमारी में देखते हैं? Marfan's के अंदर प्रीडिस्पोज हो जाता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोबारा स्टेप 2 सीके में आता है जहां वो क्लिनिकल मैनेजमेंट और डायग्नोसिस करते हैं। यानी स्टेप 1 इज अबाउट पैथोफिजियोलॉजी, स्टेप 2 सीके इज अबाउट डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो अब वो कह रहे हैं, लुक एट पेशेंट कम्स टू यू विद एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन, लुक एट द सीटी स्कैन एंड नाउ टेल मी हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट। अब हमने देखना है क्या डायसेक्शन असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व कर रही है? यस। अगर असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है तो इट इज स्टैनफोर्ड टाइप ए डायसेक्शन विच शुड बी मैनेज अर्जेंटली
सर्जिकली। आंसर था अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन। इसको कहते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 सीके। इसी को एनएमसी ने कॉपी कर लिया आपके लिए। एनएमसी इसको कहती है, जिसको वो पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, उसको अब हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंडिया के एग्जाम्स में कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है क्वेश्चन आया क्लिनिकल लेकिन इंटीग्रेट कर रहे हो बेसिक साइंस के साथ, तो दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आया क्लिनिकल, पूछ रहे हो मैनेजमेंट, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यानी वन क्लिनिकल स्पेशलिटी इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद अनदर क्लिनिकल स्पेशलिटी। अभी जो आप जो भी एग्जाम देखोगे, अगला नीट पीजी, नेक्स्ट का एग्जाम, सभी के सभी पेपर IBQs होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, पेपर के नंबर बढ़ जाएंगे, मैंडेटरीनेस बढ़ जाएगा, और लेकिन पेपर के अंदर क्लिनिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आर यू क्लियर विद ऑल दी पैटर्न्स? अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपने बताना है। अब ये प्रॉब्ली ये लास्ट स्लाइड बनाऊंगा क्योंकि आई नो आप फेस्टिवल के टाइम पे, आई डोंट वांट टू गिव यू टू मच इन्फॉर्मेशन विच इज़ बोरिंग। मेरा ये कहना है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ गेन आउट ऑफ दैट डिस्कशन, है ना। मैं एक छोटा सा यहाँ टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल को ना आपने अपना मेडिकल करियर को सोचना है। जो भी आप बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएशन करके आए हो, नीट UG पास करके आए हो, वो सब कुछ रैंक और नंबर्स पे आधारित बात थी, याद है आपको, है ना। आई एम जस्ट फिनिशिंग इट, हाँ करो खत्म, आई कैन सी द ऑर्गेनाइजर्स गेटिंग रेस्टलेस ऑल्सो ना। तो अभी नीट UG जो भी था सब रैंक था, एक नंबर था कि उस नंबर पे पहुंच गए तो बात बन जाएगी, और आपको ऐसा सब बताया भी गया कि एक बार बस मेडिकल कॉलेज में आ जाओ ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपने अब अपना माइंडसेट को चेंज करना है इस माइंडसेट की तरफ। इसका क्या नाम है? जर्नी। इस जर्नी के अंदर क्या होगा, जो भी मैं अलग अलग एग्जाम्स बता रहा हूँ, और भी कई एग्जाम है, बट टाइम की कमी के कारण मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी हम एग्जाम देख रहे हैं, डोंट लुक एट देम एज अ एग्जाम टू टेस्ट योर एबिलिटी। दीज आर ऑल एग्जाम्स ओपनिंग दी डोर्स टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। जब आप नीट पीजी दोगे तो इट विल ओपन अ डोर कि मैं किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करूं, क्या मैं 6 ईयर डायरेक्ट कोर्स लूंगा, क्या मैं 3 ईयर लूंगा, मैं आगे क्या करूंगा, ये जर्नी मेरी बन पाती है। तो मैं ये कह रहा हूं, आने वाले समय में यू हैव टू कीप अ माइंड ओपन टू फाइंड व्हाट यू वांट इन लाइफ, दैट विल बी कॉल्ड एज योर मिशन। उसको अपन मिशन मान लेते हैं। एक मिशन सोचना पड़ेगा। हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में ना समझ आए, हो सकता है सेकेंड ईयर में ना समझ आए, हो सकता है थर्ड ईयर में ना समझ आए, हो सकता है इंटर्नशिप में भी ना समझ आए। ये हो जाता है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद आपको लगेगा यार ये ब्रांच मेरा मिशन है, ये जिंदगी में मैं ये बनना चाहता हूँ। किसी के लिए वो सर्जरी होता है, किसी के लिए डर्मेटोलॉजी होता है, किसी के लिए रेडियोलॉजी होता है। हमें वो मिशन पहचानना है, ठीक है। जब ये मिशन पहचान जाओगे तो हमें दूसरी चीज चाहिए। दूसरी चीज का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होगी बोलो? स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन सिर्फ इन 3 चीजों से होगा। देखो, कंटेंट, MCQ प्रैक्टिस, टेस्टिंग, माइंडसेट। कंटेंट क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं डैम्स के अंदर, हमारे यहाँ पे आपके पास में ही फेस टू फेस लाइव क्लासरूम है, प्लस हम ऐप पे भी लाइव क्लास करते हैं और रिकॉर्डेड कंटेंट भी होता है। कंटेंट मतलब कि आपने जो पहली बार सब्जेक्ट को सुना, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड सुना, क्या वो इंटीग्रेटेड सुना और सुन के आपने उससे नोट्स बना लिए, क्या आप रोज अपने एग्जाम पैटर्न से मिल रहे हो? एग्जाम पैटर्न क्या है आपका? MCQ। तो क्या आप रोज कम से कम 50 क्वेश्चन कर रहे हो? सो इफ आई एम डूइंग 50 क्वेश्चंस एवरी डे, तो उसके साथ मेरा एक MCQ का डर खत्म हो जाता है। यू आर नॉट अ प्रिजनर ऑफ एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आपका पहला एग्जाम नीट का ठीक हुआ था, खराब हुआ था, स्कूल में खराब करते थे, सही करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई जस्ट नीड टू डू 50 क्वेश्चंस एवरी डे टू गेट अ आइडिया ऑन द एग्जाम, देन आई नीड टू अपेयर फॉर टेस्ट्स। ये अगर 3 चीजें कोई कर रहा होता है इस दौरान पे, मतलब पैरेलल आप MBBS भी करोगे, एंजॉय भी करना है लाइफ को, खेलना भी है अपना, वी हैव टू मतलब हैव अ फुल लाइफ, लेकिन साइड बाय साइड आई नीड टू बी ट्रू टू माय मिशन। मैं क्या चाहता हूं जिंदगी से, उसमें ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है। कंटेंट, MCQ, टेस्ट, कंटेंट, MCQ, टेस्ट, कंटेंट, MCQ, टेस्ट। ये अगर मैं करता जा रहा हूँ, साथ में मैं अपना कॉलेज भी करता जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप अपना जब एग्जाम लिखने के बाद आपके पास एक समय आएगा जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ ले पाओगे। लीप ऑफ फेथ मतलब? लीप ऑफ फेथ मतलब क्या होता है? आखिरी पॉइंट तक भी आपको श्योर नहीं होगा कि ये ब्रांच में मैं क्लिक करूं कि ना करूं। मतलब आप बचपन से कह रहे हो मुझे सर्जरी करनी है, जब लेकिन सच में सर्जरी लेनी होगी ना, तो बटन दबाऊं कि ना दबाऊं, यू विल बी लाइक दैट कि यार पता नहीं सही कर रहा हूं कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहा। जैसे MBBS में था, याद है जब आप MBBS में आ रहे थे, यू वर नॉट श्योर, लोग कह रहे थे जब आप MBBS की एंट्रेंस शुरू होती है
उसी समय जब काउंसलिंग हो रही होती ट्विटर पे लोग शुरू हो जाते हैं लिखना MBBS इज टॉक्सिक, MBBS इज टॉक्सिक। ज़्यादातर उसका कोई भाई बंधु होता है जिसकी पीछे रैंक होती है, वो चाहता है ये सारे आगे वाले जो हैं इंजीनियरिंग में चला जाए। जैसे ही नीट PG काउंसलिंग शुरू होगी लोग लिखना शुरू हो जाएंगे रेडियोलॉजी विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी रैंक थोड़ी पीछे होती है, थोड़े दिन के बाद वो चला जाता है, सब गायब हो जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस इज अ ब्यूटीफुल करियर, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है इस करियर के अंदर। ऐसा मत सोचें कि आपने ट्विटर पे किसी की लाइन पढ़ ली आपको लग रहा है कि करियर बर्बाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा उस दिन जब आप ब्रांच ज्वाइन करोगे। उसके बाद क्या होगा, उस लीप ऑफ फेथ के बाद आप जब जर्नी में आगे बढ़ोगे तो हमारा माइंडसेट चेंज कर देंगे हम जर्नी माइंडसेट से, जिसके अंदर हम एक्वायर करेंगे डिफरेंट स्किल्स, जो मैं आने वाले समय में आपसे मल्टीपल टाइम मिलेंगे बात भी करेंगे कि ज़रूरी नहीं है आप अमेरिका, जब मैं USMLE बता रहा था कुछ लोग सोच रहे थे हमने जाना है कि नहीं जाना, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रहने सेटल होने जाएं। यू कैन एक्चुअली गो एंड डू अ फेलोशिप एंड कम बैक इफ़ यू आर USMLE सर्टिफाइड। सो देन यू विल बिल्ड योर करियर विद अ जर्नी अराउंड इट। आप वो जर्नी बना लोगे। मैं एक जर्नी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, इसने MS सर्जरी किया, फिर MCH यूरोलॉजी किया एम्स के अंदर, फिर उस समय पर रोबोटिक्स के बारे में बात हो रही थी। 20 साल पहले इंडिया में रोबोटिक्स के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इंडिया में कोई कर नहीं रहा था। उसने MCH ऑन्कोलॉजी MCH यूरोलॉजी करने के बाद रोबोटिक सर्जरी इन प्रोस्टेट का US में फेलोशिप किया, USMLE लिखा, पास किया, फेलोशिप किया, इंडिया में वापस आया। तो मेहनत की उसने, करियर बनाया, वापस आया इंडिया में। आज नंबर 1 दिल्ली का रोबोटिक सर्जरी इन प्रोस्टेट का स्पेशलिस्ट है वो। तो इट इज़ लाइक मोर अबाउट जर्नी। अभी मेडिकल करियर को आप ऐसे मत सोचो कि कोई रैंक या कोई लॉटरी की टिकट है। ये स्कूल तक आपके लिए ठीक था माइंडसेट कि एक बार रैंक निकाल ले जिंदगी बन जाएगी, वो लॉटरी है। वो ऐसा होता है ना, लॉटरी नहीं है ये। इसके आगे इट इज़ अबाउट हाउ क्रिएटिवली यू क्रिएट अ करियर पाथ। आप करियर पाथ कैसे बनाओगे, उसमें क्या क्या चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक में डालोगे, क्या क्या स्किल सीखोगे, उससे करियर बनेगा। लेकिन इसके बीच में कुछ लैंडमार्क्स आएंगे जो गेट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, टेस्ट भी हैं। जैसे अभी तक के बच्चों का नीट PG है, आने वाले जो बच्चे होंगे वो कौन सा एग्जाम देंगे नेक्स्ट, क्या साल में ऐसा होगा अब कोई भी नहीं बता सकता। पहले लोग सब जानते थे कि 2023 में होना है, लेकिन उसके डिबेकल के बाद अब किसी को नहीं पता कि कौन सा ऐसा साल होगा जब वो उसका ट्रांजिशन करेंगे। आखिर में ना मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं आज से 25 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 25 साल पहले मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं आज VMMC में आके आपसे इतने होशियार और इतने स्मार्ट बच्चों से मैं मिलूंगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। सो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप भी नहीं इमेजिन कर सकते कि आज से कुछ साल बाद आप क्या कर रहे होगे, आप नहीं इमेजिन कर सकते। सो होता क्या है कि हमें सिर्फ ये 2 पार्ट देखने हैं। यही शायद मेरे को लगता है कि मैं सीखा है मैंने ज़िंदगी में। मैं कुछ भी अगर करता हूँ तो उस टेबल के 2 साइड हैं, एक साइड है एफर्ट, एक साइड है आउटकम। सब लोग को चाहिए 100% आउटकम। मैं कह रहा हूँ आउटकम हमारे हाथ में नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। आपका करियर अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप शानदार डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे, इज नॉट इन योर हैंड। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट आपके हाथ में। सो मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर वी डू आई गिव माई 100%। ये मैं चाहता हूँ आप भी ये रूल इनकलकेट कर लें कि आप जो भी करें 100% करें। फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं तो 100%, पढ़ाई कर रहे हैं तो 100%, कोई रिश्ता बना रहे हैं तो 100%, मम्मी से बात कर रहे हैं तो 100%। परेशानी क्या है कि नाउ वी आर सो प्री ऑक्युपाइड विद मल्टीपल थिंग्स, हम हर किसी को 50%, 40%, 30% ऐसे दे रहे हैं। मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी मज़ा किस में? 100% में। 100% जाने में खतरा क्या है? आप थक जाओगे। बस इस तरफ पे जाते ही खत्म हो जाएगा बेटा, ये वाला आखिरी पन्ना। जब आप 100% जाओगे आप थक जाओगे, आप कभी कभी थकोगे, कभी कभी हार्ट ब्रेक भी होगा। बताओ क्यों? हार्ट ब्रेक माने आपने तो 100% दिया, उसने नहीं दिया। इट्स पॉसिबल। ये करियर के लिए भी सच है। आपने 100% दिया फिर भी नीट में रैंक नहीं आया, आप हो सकता है और अच्छा करते आप पीछे आ गए, ऐसा हो सकता है। सो whenever we give 100%, sometimes it may still not work out. But the only beautiful thing about 100% mindset is you have no regrets. दूसरी चीज जो मैं सीखी वो ये दूसरी तरफ है। अब आखिर वाली साइड पे आ रहे हैं। अभी जब आप आगे बढ़ रहे हो ना जिंदगी में, जब मैं आज से मैंने MBBS मैंने जब ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं MD रेडियोलॉजी करूँगा। जब मैं MBBS में एंटर किया मुझे नहीं पता था मैं रेडियोलॉजी करूँगा। आगे जाके एक दिन ब्लर्ड पिक्चर आई, लीप ऑफ फेथ लिया, रेडियोलॉजी में गया। मुझे नहीं पता था कि मैं रेडियोलॉजी के साथ साथ डैम्स शुरू करूंगा। मुझे नहीं पता था कि 25 साल तक हम लास्ट करेंगे। मुझे नहीं पता था हम अपना मोबाइल ऐप शुरू करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट व्हेन आई लुक बैक टुडे,
When I look back today, all these random things, they look connected. So I want to share the same feeling with you. आज से कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, things will look connected. जो आज लग रहा है रैंडम, आपको लग रहा है आज पता नहीं इस सेशन में मैं क्यों आ गया, हो सकता है मैं कुछ और कर लेता, हो सकता है इतनी देर में तो यार कुछ रिलैक्स हो जाते, बट यू एंटर दिस सेशन, वी डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आ गया. मेरा कल क्लास मेरा रात को खत्म हुआ, आई केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट नाइट ओनली, बट बच्चों ने बोला कि आ जाना है तो मैं आ गया. लेकिन मेरा ये कहना है, समटाइम्स वी डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग इट एंड इट ऑल फील्स रैंडम, बट देयर इज ऑलवेज अ ग्रैंड डिजाइन, देयर इज ऑलवेज अ बिग डिजाइन. जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, जिंदगी में डॉट्स कनेक्टेड लगेंगे एंड यू विल फील यू हैड अ फुल लाइफ, यू हैव चोजन अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन. इस प्रोफेशन के अंदर आप पहली चीज जो आप सीखोगे अपने खुद के बारे में. अगर आपके खुद का पेट में दर्द होगा, राइट साइड पे हो रहा होगा, इमीडिएटली आप बोलोगे अपेंडिक्स. और साधारण लोग ये नहीं कहते, आप उनसे ऊपर आ चुके हो. अपने परिवार में कोई बीमार होगा तो, अपने परिवार में कोई बीमार होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा और उसके फादर मुंबई से मेरे पास आए मिठाई लेके मिलने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बात है, वो दोनों आए मेरे पास, कहते सर आपके लिए मिठाई लाए, मिलना चाहते, थैंक यू करना चाहते हैं. मेरे को लगा बेटे का पीजी में सिलेक्शन हो गया, अब डैम्स में आ रहा है मिठाई लेके, तो मैंने बोला पीजी में मिल गया बेटा, क्या ले रहा है? कहते नहीं सर मैं तो फाइनल MBBS हूँ अभी. तो मैंने कहा अच्छा, फिर डिस्टिंक्शन आ गई होगी ना? कहता नहीं सर मैं किसी और बात के लिए आपके पास आया हूँ. कहता कि सर आपने हमें जब पढ़ाया रेडियोलॉजी पढ़ने के बाद मेरा मन किया इमेजेस देखने का, और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया इमेजेस देखने में. पिछले दिनों मेरी मम्मी के नेक में पेन हो रहा था, तो कहता है कि मेरी मम्मी का उन्होंने CT स्कैन किया और CT की रिपोर्ट में लिखा था सर्वाइकल स्पाइन इज नॉर्मल. इंटरेस्टिंग, सर्वाइकल स्पाइन इज नॉर्मल. कहता लेकिन क्योंकि मैं अब रेडियोलॉजी में इंटरेस्टेड था, तो मैंने उठा के रेडियोलॉजी की फिल्म उठा के देखी, मैंने देखा मम्मी के थायराइड में कहता है लीजन है जिसमें कैल्सिफिकेशन आ रही थी. कहता कि सर आपने पढ़ाया था अगर माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगी तो मेलिग्नेंसी हो सकती है, और मुझे शक पड़ गया कि पेपिलरी कैंसर थायराइड तो नहीं है, और फिर मैंने उसको फर्दर वर्कअप करवाया एंड माई मदर वॉज ऑपरेटेड एट द राइट टाइम. So sometimes we don't know the privilege that we have as a doctor. You have a privilege for yourself, you have a privilege for your family. जो परिवार में कोई डॉक्टर नहीं होता उन्हें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है. You have a privilege, and then ultimately there will be a time where you will be able to extend this privilege to your family and to society in general as well. Thank you very much. It was a pleasure meeting you all. Thank you.